A very good morning to everybody present. So we are back to another session of Paper 1 Accounting, the live virtual classes foundation. And today I will be handling the concept or the chapter number 9 from the module 2. So what does this chapter number 9 talk about? It is accounts from incomplete records. Okay. One of the most easiest part, so wherein this has been combined and it's been brought from your intermediate into the foundation portion, because there is a relevance. So coming back to the point, there is a relevance. Okay. So yeah. So coming back, there is a relevance. That is why these people have combined the intermediate portion, which was there, and the incomplete records was there in your intermediate level. They have brought it now to the foundation level. Okay. So after bringing it to the foundation level, they find the relevance because your chapter 7, chapter number 8, and chapter number 9, they all are prepared in the same manner. So I'm sure you people have completed your chapter number 7 and chapter number 8. It is preparation of the final accounts and then NPO, not for profit organization, that accounts you have to prepare. So since you have done both of them, this chapter is just going to be a cakewalk. So it's going to be very, 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 very simple chapter. Okay. Coming back to the point. Now, what is this concept, ma'am? So as you can see from the heading, that is accounts from incomplete records. So what is the meaning of incomplete? That means it is not complete. It is not complete in all the aspects. Pura nahi hua. So the normal, just a minute. So coming back to the point, bill of exchange I will not be doing. Pawan, kindly, please, okay, let me go ahead with the class, right? So coming back, incomplete. So this particular books of accounts are quite incomplete. So generally, हम accounts prepare करने में कौन सा system use करते हैं? Double entry bookkeeping. एंड व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? डबल एंट्री का मतलब ये है कि किसी भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में हो रहा है, उस ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट है। दो अकाउंट्स को हम क्लासिफाई करके एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और दूसरी अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। सो व्हेन यू फाइंड आउट और एनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन विल हैव टू पार्ट्स, वन विल बी डेबिटेड एंड अदर विल बी क्रेडिटेड। So this debit and credit at every point in time should be equal. I debit the same amount I have to credit. So that is the meaning of double entry bookkeeping system. But when I am talking about incomplete records, it means that double entry system is not fully followed. Something somewhere is skipped. So we term this, we can also call this incomplete records को हम सिंगल एंट्री भी बोल सकते हैं। सो वी कॉल इट एज सिंगल एंट्री। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री दोनों एक ही चीज है। सो इसमें क्या होता है, द डबल एंट्री सिस्टम का रूल्स इसमें फॉलो नहीं होता है। सो अ ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट इन बोथ द वेज, लाइक इट माइट बी ओनली डेबिटेड, क्रेडिट पास किया नहीं होगा, क्रेडिट हो जाता है और डेबिट नहीं हो जाता है, और जर्नल एंट्री पूरा का पूरा ओमिट हो जाता है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट कैन हैपन इन एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। And where is this found? Where is this very prominent? You can ask me the question, madam, we are doing only double entry system. Even under final accounts, even NPO also, we learned all the rules that this account should be credited, this account should be debited. We prepare trading account, P&L account, balance sheet. Then where is this kind of entries possible in the real life? Yes, it is possible. Because you are studying CA, so you will know the basics of accounting. When a person starts a business, very small business, okay? When he starts a very small business, what happens? Will he know about the accounting rules? No. So there is a vegetable vendor. So, you are starting a vegetable shop today. So the person might not know I have to debit so much, I have to credit so much. उसको पता नहीं होगा. So what he will do, rough note में लिखने जैसा, he will maintain the accounts. So expenses all he will maintain. He will say these are the sales today. So that person might miss few things, correct? So all those small businesses who don't know the actual rules of accounting,
will often end up under the incomplete records model. So, madam, what should we do now? हम क्या करना है इससे? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में जो ट्रांजैक्शंस और इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, उसी इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट्स को आप पढ़ के अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. व्हाट आर द अकाउंट्स मैडम? आई विल टेल यू. अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद वो मिसिंग फिगर्स जो है, आपको उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. वैल्यू को कैलकुलेट करके आप फाइनल अकाउंट्स में जो अकाउंट्स बनाता है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट, उसी को यही में भी करना है. So the same things, the same kind of accounts will be flowing even in an incomplete records. But यहाँ पे एक चेंज क्या होता है, आपको पूरी तरह का ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है. आप चैप्टर नंबर 7 पे ट्रायल बैलेंस आपको दिया होगा और एडजस्टमेंट्स आपको मिलेगा. आप उस एडजस्टमेंट्स को दो दो इफेक्ट करके देके आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर बना के आप टैली कर देगा. यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है. वर्किंग नोट ज्यादा बनाना है. आपको कुछ अकाउंट्स को ओपन करके वहां का मिसिंग फिगर्स को वैल्यू करके वो मिसिंग फिगर्स को इसमें डालना है. आप ये सी इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो, इस चैप्टर में आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा. पर बैलेंस शीट इसको नहीं बोलते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं. Instead of the balance sheet that we call for the final accounts, okay, we will be calling that as what? Statement of affairs. Madam, why are you changing the name? Name क्यों change हुआ है यहाँ पे? क्योंकि balance sheet means when a balance sheet is given, okay, so technical team Priyamvada. Okay, can you make Priyamvada Chabria as the co-host as well? Manish, can you just look into that? Okay, so coming back, why are we calling this, और क्यों हम statement of affairs बोल रहे हैं for incomplete records? क्योंकि इस अकाउंटिंग सिस्टम में हमको पूरी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है हमारा पास. थोड़ा थोड़ा वो रफ में कौन सा इंफॉर्मेशन हमको पता है, उससे हम अकाउंट्स बना के वी आर गेटिंग द एस्टिमेटेड फिगर्स. सो दैट इज व्हाई हम इसको बैलेंस शीट नहीं बोल सकते हैं, पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल सकते हैं. सो इस स्टेटमेंट पे उस स्मॉल बिजनेसमैन का कौन सा असेट्स है, कौन सा लायबिलिटीज है, हम एक एस्टिमेट के वजह से वहां पे लिखते हैं. So what is the first thing that you people have to learn? It is the same like your final accounts preparation. Incomplete records or single entry system, whatever information is given to you, based on that, you will be preparing the normal final accounts, trading account, P&L account and balance sheet. But here, आप बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलते हैं, पर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक मिनट. Just a minute. No issue. Just give me 1 minute. Don't make anybody the co-host, Ajit. Okay? Until and unless I tell, nobody's becoming the co-host. I just got a call from Priya. Okay? You're there, Manish? Okay, fine. Am I audible and is it visible? There was a small technical glitch, no problem. Okay, so please don't talk among yourselves or no messages. Nobody's becoming the co-host, nothing. Please listen to the class properly, first of all. Okay.
Okay, so now coming back, you call the balance sheet under the single entry system as the statement of affairs. The statement of affairs has to be prepared on 2 dates. So I'll tell you later why you will prepare, how you will prepare. So when we talk about the incomplete records, it's the same like your final accounts preparation, same. But what is the only difference is that, my dear students, in this particular chapter, आप वर्किंग नोट्स में कुछ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है. So what are the accounts, ma'am, that I have to prepare? So here you need to understand that the first account that you need to prepare will be your cash and bank account. Yes, you already know how to prepare a cash and a bank account. Very simple, nothing bigger. Very, very simple. All that you receive, receipts आपको डेबिट करना होगा. Cash and bank account में डेबिट साइड में the first one will be the receipts you have to debit. जैसे कि आप कैश डेटा से रिसीव कर सकते हैं, वो आपका रिसिप्ट है, आप उसको डेबिट करते हैं. आप कैश सेल्स कर सकते हैं, सेल्स करने से आपको पैसा कैश मिलता है, सो यू विल हैव टू डेबिट दैट ऑल्सो. आपका कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो आप उसको भी डेबिट साइड पे दिखाते हैं. What will come on to the credit side? All the payments that you do. It can be for the expenses, you can do the payments, or you can do payment to the creditor. Creditors से आपको कुछ गुड्स परचेस करने के बाद उसको आप पेमेंट देते हो. So this creditors payment will come this side, and then आपको आएगा closing balances. Okay. Apart from this, when you read the question, आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, इसके बिना कोई और भी ट्रांजैक्शंस आने से उसको आप विजुअलाइज करना चाहिए. ये रिसिप्ट होएगा या कि ये पेमेंट होएगा. रिसिप्ट रहने से उसको डेबिट करो, पेमेंट होने से उसको क्रेडिट करो. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ अ कैश एंड बैंक अकाउंट विल लुक लाइक. सो आपको जब एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, यस, then you will read the question. आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश का और बैंक का, पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं है. आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आएगा कि क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स को ओपन करके कैश और बैंक अकाउंट, ये तो कैश बुक जैसा ही है, जस्ट द सेम कैश अकाउंट और द कैश बुक, दैट्स इट. सो उसको ओपन करके सभी सारा ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करके बैलेंसिंग फिगर, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है. नहीं, आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है क्वेश्चन पे, कैश सेल्स नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे? इसी अकाउंट को ओपन करके सभी सारा ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करके आपको अब मिलेगा बैलेंसिंग फिगर कैश सेल्स. सो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुल पढ़ना है. You have to read the question very carefully so that you understand what is required. In incomplete records or a single entry system, all the transactions or all the balances will not be given to you readily. Okay? It will not be given to you readily. You have to go ahead, understand, समझ में उसको पढ़ के उसको you have to understand, and then आपको ये अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद कौन सा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको वहां से लेके आप कहीं और उसको सब्स्टिट्यूट करना है. इज दिस क्लियर? दिस इज हाउ अ कैश एंड बैंक बुक विल लुक लाइक. See, I will take all your doubts. The time is only 11:15. Okay, at 12 o'clock sharp I will be breaking the class 10 minutes के लिए, and I will take your doubts. Okay, now please listen to the class now. Okay, so now coming back, the Priyamvada Chabra, enough. We are not going to make you the co-host. It is better you either listen to the class, okay, or you be silent. Very important. Now coming back, this is the first one, right? Now we go ahead with the second account. Madam, what is the second account? Second account is the most simplest account. It is nothing but the debtors account. Debtors account or receivables account. Both mean the same. दोनों नाम एक ही है. Okay?
So now a debtors account is your asset or a liability? You people tell me. Is debtors account asset or liability? Debtors account is an asset. Perfect. So it will have either debit balance or credit balance. You tell me, debit balance or credit balance? Asset, correct. Very good. A debtor account will have a general balance of a debit balance because it is an asset. Perfect. That's all. Why I am telling this? Because if anything increases the debtors, you should debit them. If anything decreases the debtors, you should credit them. आपको ये बात समझ में आया? Debtors account होता है current assets. So assets का general balance होता है debit balance. आपको असेट को इंक्रीज करना है, यानी किसी ट्रांजैक्शन से ये वाला डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, उसका इफेक्ट डेटर्स इंक्रीज हुआ तो आप उसको डेबिट करना चाहिए। आप एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के इस ट्रांजैक्शन से मेरा डेटर्स वैल्यू कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या करनी चाहिए? क्रेडिट करनी चाहिए। आप सभी समय एक अकाउंट को आप कंस्ट्रक्ट करने के समय पे ही यू शुड थिंक ये वाला असेट है या लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है यानी इनकम है। सो इसी वजह से आप ये डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस को माइंड में फिक्स करना पड़ेगा। क्यों मैडम, ये सब क्या क्यों करना है? आप फिक्स करने के बाद जो कुछ ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट को बढ़ाएगा उसको एक जनरल बैलेंस जैसा करना है। फॉर एग्जांपल डेटास का जनरल बैलेंस है डेबिट, कोई कुछ ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डेटास को इंक्रीज कर देता है, लाइक उसको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटा का बैलेंस क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। सो क्रेडिट सेल्स होता है डेबिट इस अकाउंट पे। ओके, पर डेटास हमको पेमेंट देता है, डेटास हमको वापस पैसा देता है, सो दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसको रिड्यूस करता है, डेटास बैलेंस कम हो जाता है। सो कैश रिसीव फ्रॉम डेटास हम क्रेडिट करते हैं। यू अंडरस्टूड? Always understanding the logic of why an account should be debited credited is the basic. So if you understand क्यों ये वाला हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, आप किसी भी अकाउंट को कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द डेटर्स अकाउंट। सो जनरल इसमें कौन सा एंट्रीज आता है मैं उसको यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। सो सिंस ये वाला होता है डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो भी कुछ आपको क्वेश्चन में मिलता है वो ओपनिंग बैलेंस आपको डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन उसी ईयर में आप कौन सा और कितना क्रेडिट सेल्स कर रहा है। यू कैन आस्क मी मैडम व्हाट अबाउट कैश सेल्स? तो कैश सेल्स हम कहाँ लिखते हैं? कैश सेल्स हम लिखते हैं कैश बुक पे, यहाँ डेटास अकाउंट पे वो वाला सेल्स जो हम क्रेडिट पे करते हैं उसी को यहाँ पे लेके आना है। तो द सेकेंड वन विल बी टू क्रेडिट सेल्स। ये वाला क्रेडिट सेल्स है तो इसको डेबिट करना चाहिए। क्यों? आप क्रेडिट सेल्स करने से डेटास का बैलेंस इंक्रीज होता है, सो यू आर सपोज टू डेबिट इट। क्लियर? नाउ आप बोलो कौन सा एंट्रीज मेरे को क्रेडिट में लिखना है? एनी एंट्री जिसका इफेक्ट होता है डेटास का वैल्यू कम करने का, वो सब एंट्री यहाँ पे आता है। तो मैं क्रेडिट सेल्स किया, क्रेडिट सेल्स में मेरे को सेल्स रिटर्न्स होने का पॉसिबिलिटी है, कुछ सेल्स रिटर्न्स हुआ तो उसको मैं क्रेडिट में लिखती हूँ। करेक्ट? ओके, द सेकेंड वन इज मुझको डेटास कैश दे रहा है, सो इफ दे आर गिविंग यू द कैश, debtors balance will reduce. Very good, Sunil. So many people are answering. I'm really happy. Now जब वो debtors हमको कुछ कैश देते हैं, we can give them, हम उसको क्या दे सकते हैं? डिस्काउंट। उसको जल्दी पेमेंट करने को एंकरेज करने के लिए हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं। तो दैट डिस्काउंट अलाउड, ये वाला है हमारा एक्सपेंस। करेक्ट? सो ये डिस्काउंट के हिसाब से भी वी कैन हैव द डेटर्स बैलेंस कम हो सकता है, सो डिस्काउंट अलाउड आ सकता है। नाउ समटाइम्स डेटर्स के पास पैसे नहीं होने के कारण वो आपको पेमेंट नहीं दे सकता है, सो उसको हम क्या करते हैं? वो वाला होता है हमारा बैड डेट्स, ये कंपनी का लॉस है और इससे भी हमारा डेटर्स बैलेंस रिड्यूस होता है। So we will be writing or we will be crediting the bad debts. Very good, my dear students. Then what can come?
मैंने ये वाला बताया कि बिल्स रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज दिस बिल्स रिसीवेबल? व्हेन डेटर्स एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज को वो साइन करके दे देता है, दैट इज कॉल्ड एज बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करने के टाइम पे एक्सेप्ट किया है डेटर, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ जाएगा और यानी रेड्यूस हो जाएगा। 5,000 था, दे हैड टू पे मी, बट मैंने क्या किया, उसके पास जाके बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन करके लेकर आया। सो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। क्या होगा? डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा और बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड, ये वाला ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट करना चाहिए। You are supposed to credit this transaction. Why, madam, I am supposed to credit the transaction? Because, my dear students, when bills receivables is accepted, debtors balance comes down. So I will be writing here. Now you tell me. Now you tell me, if bills receivables is dishonored, what will happen? Again, he will become your debtor. Debtor's balance will increase. So when a bills receivable gets dishonored, debtors का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर debtors के अकाउंट में ही आकर बैठेगा। बिल्स रिसीवेबल तो उसने पेमेंट नहीं किया, तो वो बैलेंस वहां पे कैंसिल हो जाके फिर debtors का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। He will again become your debtor. क्लियर है? ये वाला है मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस जो आ सकता है। ओके, बैड डेट्स रिकवर्ड, पवन पवन यादव, बैड डेट्स रिकवर है कॉन्सेप्ट, वो इस डेटर्स अकाउंट में नहीं आता है, वो सीधा आपका पी एंड एल अकाउंट में आ जाता है। आप कैश रिकवर करते हो या बैंक रिकवर करते हो, उसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा। दैट्स अ वेरी गुड डाउट, बिकॉज इफ बैड डेट्स, यहाँ पे आप बैड डेट्स होने के टाइम पे क्रेडिट कर रहे हो मैडम, बैड डेट्स रिकवर होने से यहाँ पे लिखते हैं नो, bad debts recovery will be taken directly to your P&L account because that's an income. Is this clear? Okay, I'll ask you one more question. Provision for bad and doubtful debts. What is this? Provision for bad and doubtful debts. Where will you show this? You tell me. You'll show it in your this account. Yes, credit side. Okay, Divya Raj, shall I show it on the credit side, the provision for bad and doubtful debts? Harshvardhan says, no, madam, it's going to the P&L. Okay, Shri Krishna also says it's going to the P&L. Okay, no, you will have to debit. Debit. Oh, debit where? So now coming back, my dear students, provision for bad and doubtful debts will not come into your debtors account. It is a provision that you are creating. आप तो provision create कर रहे हो. Bad debts हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा, पर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, फ्यूचर में बैड डेट्स आ सकता है, इसलिए अभी से मेरा का प्रॉफिट से मैं कुछ अमाउंट को साइड में रखती हूँ। सो वो उसका कॉन्सेप्ट है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सो ये वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं आएगा डेटर्स अकाउंट पे, ये सीधा चले जाएगा पी एंड एल अकाउंट पे, डेबिट करते हो। और इसका दूसरी इफेक्ट ये होती है कि वो बैलेंस शीट में, और यहाँ पे हम उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं ना, सो इन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्हेन यू आर राइटिंग योर डेटर्स बैलेंस, उससे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करते हैं, उससे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस करते हैं। सो ये बात बहुत ध्यान से सभी लोग सुनो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला ट्रांजैक्शन डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, ये सीधा चले जाएगा पी एंड एल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। ओके, और डेटर्स से ये वाला रिड्यूस कर सकते हो। परिधि, यस यू कैन डू दैट, लाइबिलिटीज में भी लिख सकते हो ये वाला, पर यू कैन, दिस इज द यूजुअल, आपका टेक्स्ट बुक में इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो किया तो आप भी डेटा से ही इसको रिड्यूस कर दो। नहीं, मैं लाइबिलिटीज में उसको शो करना है, देन प्लीज गिव अ नोट। आप नोट में ये बात लिखना है कि मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स बैलेंस से हटाया नहीं, पर मैं लाइबिलिटी में उसको दिखाया। ओके, सो कमिंग बैक, यस, इज दिस ओके?
debtors minus the provision for doubtful debts, provision for bad debts and everything. So इस वाला अकाउंट में ये सब ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद, ओके, ये सब ट्रांजैक्शंस को लिखने के बाद, हाँ पवन, बैड डेट्स रिकवर्ड आपको डेटास बैलेंस से ही मिलता है, पर व्हाट हैपेंस यू नो, इसका टाइम पीरियड डिफरेंट अलग होता है। लास्ट ईयर आपने जो बैड डेट्स अकाउंट और बैड डेट्स यहाँ पे अमाउंट लिखा, उसी ईयर में आपको नहीं मिलेगा वो अमाउंट, दूसरी ईयर में 2 साल के बाद, ऐसा टाइम डिफरेंस होता है। एक टाइम डिफरेंस और अकाउंटिंग पीरियड बदल जाने से क्या होएगा, आपको डेटास वो पैसा देने से भी आप उसको इनकम जैसा समझते हो। किसी का डेटास बैलेंस में उस ईयर का डेटास अलग हो सकता है, और ये वाला बैड डेट्स रिकवरी आपको किसी और डेटा से मिल सकता है। तो ये दोनों से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने ये वाला बताया कि बैड डेट्स रिकवर्ड को अकाउंट ये डेटास बैलेंस में मत लेके जाओ, ये तो पिछले वाला साल में हुआ है। सो वो ट्रांजैक्शंस अभी हम इस डेटास अकाउंट में इफेक्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम उसको P&L अकाउंट ले जाते हैं। So we are not supposed to get that particular bad debts recovered into this account. Okay, provision for bad and doubtful debts, bad debts recovered will not come here. And finally, my dear students, आपको क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। क्लियर? आपको क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। As simple as that. This much will be for your debtors and receivables. Yeah, it will go back to the next year. Okay. It will be going back to the next year. Okay. So, Manish, can you please remove one Mr. Vishal from the meeting or whatever? Yeah. Vishal, he's raising his hand also. Please kindly remove him. Yes, correct. Okay, Paradeep. Done. Now we will be going ahead, okay? So we will be going ahead, and the next account that we have to prepare is debtors receivables. Okay, now it is over. Now we are going to prepare कौन सा account है वो? Creditors account we will be preparing. Okay, very good. Now creditors और payables दोनों एक ही बात है. So now you people tell me a creditor account or a payable account will be having which balance? It is a correct. It is a credit balance because ये होता है आपका liability. आप creditors को money pay करना है, so ये वाला liability होता है और इसका balance होता है credit. So जिसी भी transactions हमारा creditors balance को increase करता है, उसको हम क्या करना है? Credit कर देनी चाहिए। और जो बैलेंस और जो ट्रांजैक्शंस इस बैलेंस को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, उसको हम डेबिट करना है। दैट्स ऑल। ओके, तो हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा। ओपनिंग बैलेंस फॉर अ क्रेडिटर्स अकाउंट विल बी कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड, सो आई विल बी पोस्टिंग इट हियर। व्हाट एल्स विल इंक्रीज दिस अकाउंट? व्हेन यू डू क्रेडिट परचेजेस, करेक्ट? वेरी गुड। बाय क्रेडिट परचेजेस, मैंने क्रेडिट में परचेज किया तो क्रेडिटर्स का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट? क्रेडिट परचेजेस, कुछ रिटर्न्स किया मैंने परचेज करके, वो क्वालिटी अच्छा नहीं लगा तो मैं उसको रिटर्न कर दिया, ये वाला होता है इफेक्ट क्रेडिटर्स को कम करने का। तो आई विल बी राइटिंग इट ऑन द क्रेडिट साइड। वेरी गुड हर्षवर्धन। सो ही सेज मैडम कैश पेड, मैं कुछ अमाउंट क्रेडिटर्स को जो भी पे करता हूं उससे मेरा क्रेडिटर्स बैलेंस कम होता है। ओके, व्हाट इज दैट? आई हैव टू गिव यू एग्जांपल। अमला, रेशमा, which thing you want me to give an example? Okay, so cash paid to the creditors, it comes down. Okay, very good, Kanish. So he says when I make a payment to them, okay, when I make a payment to them, they can say 1,000 rupees you have to pay, but you paid me early, so take 100 rupees discount. So the discount received will be coming here only. Very, very good. Discount received will come here. And then
Bills payable accepted. Very good. When you are accepting the bills payable, creditor balance reduces and then it will be the other part. Okay. So then it will be the other part, bills payable. Okay. So Dr. Ravi, it seems, NV Ravi. Dr. Dr. NV Ravi, please remove that fellow from the class. Yeah. So bills payable. When the bills payable gets dishonored, what happens again? It comes back to the same part. Okay. Bills payable dishonored. Right? Apart from this, do you have anything else? Like what you had for the debtors balance? It is the same thing. Very good. And closing balance, opening balance comes on the credit side. Now the closing balance comes on the debit side. Okay. Closing balance comes on the debit side. That's all. So incomplete records may, yeah. So incomplete records में या any fine for payment या you are thinking out of the box, that's very good तन्मयी. But coming back, आपको उस तरह का complicated sums नहीं आता है, बहुत simple सा questions ही आपको आता है. But the only thing in a single entry or an incomplete records is you should prepare a lot of working notes. Okay, so that is why it will take a lot of time for you to solve one question. So that is why you need to keep preparing, keep practicing again and again and again and again. Okay, purchases written, I have written here, Sunil. Yes, I have written the purchases written. Okay, so we are doing all of this here. Manish, kindly remove that Dr. NV Ravi, it seems. Okay, bills payable का concept नहीं समझ आया इस ledger account में. Okay, credit purchases we are doing it this side. Okay, so bills payable का concept कुछ भी नहीं है पवन. Bills payable का concept वो होता है जब आपका creditors आपसे कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन ले लेता है, सो वो उसको जाके वो फिर डिस्काउंटिंग करता है बैंक में. ओके, आपको ये बात समझ में आना कि इधर डेटर्स अकाउंट में हो यानी क्रेडिटर्स अकाउंट में हो, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल का इफेक्ट ये होता है, डेटर्स का बैलेंस कम हो जाता है और क्रेडिटर्स का बैलेंस कम हो जाता है. दैट्स इट. ओके, या ओके श्री कृष्णा, दिस इज फाइन, परफेक्ट. The last account or the thing that we wanted to or I wanted to discuss was your capital account. Okay, was your capital account. Madam, capital account कैसे होता है? Capital account का balance होता है credit balance. Okay, capital account का balance होता है credit balance. आपका opening balance और opening capital आता है credit पे और क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड. ओके, नाउ प्लीज लिसन वेरी वेरी केयरफुली. I know that you know the concept, but for the benefit of the others also, please kindly listen. Okay, now during a period I was talking about small business people maintaining the incomplete records of the single entry system, correct? So when this happens, it is very important for you people to prepare the capital account. Why should I prepare the capital account? To know the profit or loss for the current year. Madam, if we prepare trading account, P&L account, we will know the profit or loss. No, madam, then why I have to do? No. Few questions like from your illustration 1 to illustration 5, they don't give you the complete information. आपको incomplete records यानी single entry system of bookkeeping ये वाला questions पे, in some questions, किसी questions पे आपको पूरा information नहीं दिया जाएगा. ओके, पूरा information आपको नहीं मिलेगा. उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट. इस कैपिटल अकाउंट में आपको ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा. इसके साथ आपको दो और ट्रांजैक्शंस भी आपको वैल्यू दे जाएगा. व्हाट इज दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस? एक होता है ड्रॉइंग्स, दूसरा होता है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो आप फ्रेश कैपिटल इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग द अमाउंट इंक्रीजेस.
सो वी विल बी राइटिंग, आप कितना सा भी कैपिटल आप इन्फ्यूज करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में, उसका इफेक्ट से कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा. सो यू आर सपोज टू इंक्रीज द कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल. ओके, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, इसको आप क्रेडिट करना है. यू हैव टू क्रेडिट द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है. जैसा भी हम कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसा भी हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए वो बिजनेस पर्सन यानी ओनर कुछ अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसका कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, उसका अमाउंट वो बिजनेस से ले लेगा. नहीं तो उसका कुछ और पर्सनल एक्सपेंसेस वो बिजनेस का कैश से वो लेके वहां पे एक्सपेंस करेगा. तो ये होता है पर्सनल एक्सपेंस. ये वाला सब हम ड्राइंग्स कहते हैं. ड्राइंग्स क्वेश्चंस पे आपको ये वाला ड्राइंग समटाइम्स दे माइट नॉट गिव यू वेरी डायरेक्टली. तो ये वाला वो बताते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए वो पैसा ले लिया है, नहीं तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ ऐसा दे दिया है, उसका घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये वाला भरने के लिए बिजनेस से वो एक्सपेंसेस कर लिया है. ऐसा कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलने से इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना पड़ेगा, ये है ड्राइंग्स. ये बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है. इन द कैपिटल अकाउंट योर ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डेबिटेड. क्लियर? योर ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डेबिटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? यू टेल मी श्री कृष्णा. ड्राइंग्स जो होता है वो बिजनेस का पैसा ओनर लेके उसको स्पेंड करता है. उसका इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट के क्या करना है, वो बिजनेस को पे करता है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा. नहीं तो आप ये इंटरेस्ट को पी एंड एल अकाउंट इनकम में भी ले सकते हैं. क्लियर? सो दैट इज हाउ इट कम्स हियर. नाउ फिनिश. ये सब आप भरने के बाद, या दिस इज अ सब्सिडरी बुक, ये सत्य. ये सब भरने के बाद आफ्टर यू फिल ऑल दिस इंफॉर्मेशन, इफ यू आर गेटिंग अ बैलेंसिंग फिगर ऑन द क्रेडिट साइड, it is a net profit. Okay, or if you are getting the balancing figure this side, it will be net loss. That's all. But in your textbook, my dear students, in your textbook, if you look at the presentation in your textbook, what happens is interest on capital, interest on drawings. So Sri Krishna, so this will not be asked technically, that will come out to the opposite side. That's all. Interest on capital, if capital का opening balance इस तरफ है, interest on capital business उसको pay करना है, correct? So that will come out to the credit side, but technically they'll take it to your P&L. You don't have to worry. So you people have to worry about only this account. And आपका textbook में formula दिया है. What is the formula? What does the formula say? क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट से ओपनिंग कैपिटल अकाउंट को फाइंड करना है. सो यू नो द प्रोसेस. क्लोजिंग अकाउंट से यू हैव टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. सो यहां से लेके ये वाला यू शुड कम बैक हियर. तो क्लोजिंग बैलेंस के सेम साइड क्या है? ड्रॉइंग्स है. तो आप ऐड करते हो ड्रॉइंग्स को. मैं कुछ भी नहीं कर रहे, आई एम जस्ट सीइंग द लेजर अकाउंट एंड पोस्टिंग इट हियर. And then you are subtracting the capital introduced during the period. Okay, this is why, madam, you are doing like this, because I started with the closing capital. I want to find out my opening capital. Okay, I started with the closing capital. I want to find my opening capital. Then how will I do that? It is very easy. इसी ledger को follow कर दो. क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग कैपिटल के साथ ड्राइंग्स को ऐड कर दो. Add the drawings to the closing capital and subtract the capital introduced, because ये इस तरफ है, opposite side है, इसको subtract कर दो. आपको मिलेगा closing opening capital. Okay, ये formula ठीक है? Did everybody understand this formula? Everybody sitting here? Yeah, debit minus credit. Okay, good. Now, using this formula, I am going to go ahead with your illustration number 1. Very, very easy. Finish. The answers or the concepts become very quite easy. Now, everybody don't try. Please look onto the screen. If you have textbooks, please open it.
Raju does not maintain proper accounts or records of his business. However, he provides the following information. He is given you opening capital. He has given you closing capital. And come down. If we come down, he has also mentioned about the drawings during the year and capital added during the year. Clear? So, हम क्या करते हैं? Shall we go ahead and do this account first? Yes. We will do this account, then I will show you the formula also. Clear everybody? So what is the opening capital ka balance? Opening capital balance is 10,000. Closing capital balance is 12,500. And then his drawings during the year is 3,000. And then the capital introduced is 3,750. Clear? Now, can you calculate and tell me which side is more? What is the closing balance? I'm sorry. I'm not sure. Closing balance is 12,500 only. Yeah. The debit side is more. That means 15,500 is coming here. Here also 15,500. So the balancing figure comes which side? Credit side mein balancing figure is coming. How much is the value? Very good, Paridhi. It comes to 1,750. If it comes in the credit side, ये होता है आपका net profit. Clear? So net profit balancing figure. In your illustration number 1, the net profit becomes your balancing figure. This is how you are doing the question. Okay? Very good, Saleha. Hi, you are come back to the class. Okay. So now come back. ये वाला हम, we can do it even using your formula. So formula में क्या है? Closing capital का value है 12,500. इससे हम drawings को add करते हैं और capital introduced को subtract करते हैं. So opening balance कितना हुआ? How much is the opening capital balance? 11,750. Yeah, Sri Krishna, good. 11,750. I've come to this. Everybody following this particular thing? Formula. I'm using the formula and I am doing it. Yes. So इस formula से मेरे को मिला है opening capital 11,750. But actual opening capital कितना है? Actual opening capital है 10,000. पर क्या हुआ है? मेरा ये वाला कैपिटल बड़ा है. It is more. So whenever from the closing capital you use the formula and find out this capital, if it is more, then it is a profit. यहाँ भी आपको प्रॉफिट आता है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला आपको 9,000 फिगर मिल गया और 10,000 है एक्चुअल कैपिटल. ये रिड्यूस होने से हम इसको लॉस बोलते हैं 1,000. क्लियर? आपका टेक्स्ट बुक में दोनों ही मेथड आपको दिया है. यस, दिस इज अ गुड पॉइंट श्री कृष्णा. मैडम, which method should we use? Madam, you are telling both the methods. You can use any method that you want, but formula will be simpler. Instead of opening the account, putting everything, do the formula. Clear, everybody? So the illustration 1 is clear. Can we go ahead with the illustration number 2? Okay, good. Illustration number 2, very simple. I don't know. This particular chapter is quite simple. Very, very simple. Okay. The next one is nothing but preparation of the statement of affairs. All of you please look at the board. Please see statement of affairs. मैंने बता दिया पहले ही, ये कुछ भी नहीं है, ये balance sheet होता है. But under the single entry system, you don't call that as balance sheet. Instead, you write that as statement of affairs because आपको पूरी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसलिए उसको अलग से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं. बट वो भी असेट्स और लायबिलिटीज ही दिखाएगा. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपको 2 डेट्स में प्रिपेयर करना है. ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल यूजुअली बी प्रिपेयर्ड ऑन 2 डेट्स, द ओपनिंग डेट एंड द क्लोजिंग डेट. वही मैडम, ओपनिंग डेट में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करके आपको
कैपिटल बैलेंस ओपनिंग का बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट करना है. सो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स द कैपिटल बैलेंस ऑन द ओपनिंग डेट. उसको लेके इसी फॉर्मूला में डाल के आपको क्लोजिंग कैपिटल में उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में वो अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा. इसलिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हाउ मेनी डेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं. सो व्हेन डू यू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, फॉर हाउ मेनी डेट्स यू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? एवरीबडी, will you prepare it for 1 day or will you prepare it for 2 days? Very good, you will be preparing it for 2 days. And that too, Pawan, I will tell you, that is a theory question, you please wait. So coming back, you will be preparing it for 2 days. Opening as of 1st of April, closing as of 31st March the next year. Why, madam, I should prepare? From the opening statement of affairs, what is the figure or value you will get? You will get the opening capital fund. Not fund, opening capital balance. Fund hota hai NPO mein. Now we are doing a normal incomplete record. So you have to call it as opening capital balance. Okay. Using that, you will be coming or you will be finding out closing capital balance. Clear, everybody? Now let us go ahead with the second question. Illustration number 2. All of you please see. Rakesh started his business on 1st of April 2021. He invested a capital of 1 lakh. तो opening capital का balance already आपको मिला है. On 31st March 2022, ये वाला date है closing का. He has the following information available as per the single entry system. तो cash balance is there 3200, inventory is there, receivable from Ajay. Receivable from Ajay का मतलब है अजय है debtor. Okay. So receivable balance है, machine है उसके पास 85,000, payable to Vinod है towards the credit balance. Okay. Now we are understanding the next. Loan taken from the bank है. Okay. Loan taken from the bank है 10,000 और drawings है during the year 24,000. So आपको क्या करना है? What are you supposed to do first? With the given information, you are supposed to prepare the statement of affairs and find out the closing capital balance. Madam, from the statement of affairs, how I will be preparing? Very simple. You will post, Satya was telling me, madam, capital is equal to asset minus liability. The same concept I am going to do here. What I am going to do here, all of you please see. Illustration 2, I am going to prepare in the books of Rakesh. Okay. In the books of Mr. Rakesh, I am going to prepare statement of affairs. Don't write, please concentrate, as on 31st March 22. तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है आपका बैलेंस शीट जैसा. असेट सब इस तरफ लिखते हैं और हम लायबिलिटी सब इस तरफ लिखते हैं. So why are we doing this? To find out the closing capital balance. Okay. Shall we go to the assets one by one? हम लिखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट है मशीनरी 85,000. मैडम कुछ ऑर्डर में मैं फॉलो करना है. इट इज ऑलवेज बेटर यू फॉलो विद द फिक्स्ड असेट्स. आप फिक्स्ड असेट्स से स्टार्ट करके करंट असेट्स पे आ जाओ. सो इसी तरह में हम प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट यानी आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सो फर्स्ट होता है मशीनरी, उसके बाद है हमारा करंट असेट्स अभी है यहाँ पे. तो मैं लिख रही हूँ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री है 34,800 और आपका रिसीवेबल्स अजय से यानी आपका डेटर बैलेंस है 31,000 और आपका कैश बैलेंस काउंट करके उसको उसने दिया है कि 3,200 है उसका बैलेंस. ओके. और क्या है? पेएबल्स है विनोद का. सो पेएबल्स हमको आता है लायबिलिटीज में. पेएबल्स होता है और है 12,000 और वो लोन ले लिया बैंक से. सो द लोन टेकन कम्स टू 10,000. मैडम अभी मेरे को इंफॉर्मेशन है. वी ऑल्सो हैव इन द क्वेश्चन अबाउट द ड्रॉइंग्स. शुड वी टेक हियर द ड्रॉइंग्स? नो. The drawings or the fresh capital introduced should be adjusted with the capital. Okay. I will tell you later. Now I have posted everything. Now the balancing figure will come onto the credit side. Can somebody tell me what is the balancing figure?
What is the balancing figure after you post everything? Yes, Sri Krishna, good. This comes to 1,32,000, am I right? Yes? Praprit, okay, good. So ये होता है closing capital. Clear? Okay. Now, yes, all of you please listen to me very, very carefully. After getting the closing capital, you need to see, yeah, total is 1,54,000. Very good. Tanmayi, very good. 1,54,000. Now, madam, I prepared statement of affairs. यहाँ तो sum हो गया नहीं. You were supposed to find out whether profit or loss is there in the question. Correct? So now what you will go? Please do the formula. Closing capital starting point है. So it will be 1,32,000. यहाँ पे मिल गया. वो इसको यहाँ पे लेके आ जाओ. Now what you have in the questions? आपके पास है drawings. हम drawings को should we add it with the closing capital or subtract it? You are supposed to add it. Okay, you are supposed to add. So आपको मिलता है 1,56,000 है actual capital. I mean ये वाला फॉर्मूला से आपको मिल रहा है 1,56,000. But you people tell me what is the opening capital given to you in the question? So the opening capital question में दिया है 1 lakh. 1 lakh हुआ है 1,56,000. Now come here. 56,000 होता है profit. Okay. I told you, why are you adding, ma? Why are you supposed to add this particular 24,000? Because capital account I already prepared. Closing capital drawings is on the same side. So you are adding the drawings. If you have additional capital introduced, that you have to subtract it. That what you have to do? You are supposed to subtract it. Is this clear? So is taraf. So by like this method, in this method also, you understand how to calculate the profit. कैसे हम profit को calculate करते हैं? पहले हम करते हैं ये statement of affairs. Closing balance capital को calculate किया. उसको लेके drawings को add कर दिया. इस question में fresh capital नहीं है. Fresh capital होने से आप उसको subtract करना पड़ेगा. यहाँ नहीं है. So if it is this, Shri Krishna, if opening is less, yes, it is a loss. Okay. Now this value is more and this is less, so it is a profit. If it is opposite, then it will be, okay, then it will be the profit. Okay. I will be taking the doubts in another 8 minutes. Another 8 minutes, I'm going to finish another illustration. Is this clear for everybody? Illustration true is okay. We first did the statement of affairs and found out the closing capital. Using the closing capital, we have found out the profit. Very good. Now I go ahead to the next question, which is the next question, another simple question. See, this is a theory thing, okay? Now please come here. Illustration number 3. Assets and liabilities of Mr. X as on 33, 21 and 22 are as follows. आपका पूरा asset balances मिला है, दिया है यहाँ पे, liabilities भी दिया है और adjustments भी है. Everything is simple. Please read this. First है depreciation का adjustment. Depreciation क्या करना चाहिए? What should you do with the depreciation adjustment? With the opening balances, the building is depreciated by 2.5%. So the meaning is, all of you please see, the building has a balance of 1 lakh rupees. उसमें 2.5% होता है 2,500. Correct? So उसको subtract करके ये वाला question mark है, उसका आंसर होता है 1 lakh minus 2,500, which is 97,500. So depreciation का इस तरह का adjustment करनी चाहिए. Then furniture is how much? 10%. So furniture का opening balance value कितना है? It is 50,000. इसमें 10% है depreciation. So 10% of 50,000 gives you 5,000. उसको subtract करके आप यहाँ पे 45,000 लिख देंगे. Is this okay? Now please come down. ये इस वाला पढ़ो. One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and 40,000 is retained in the business. So what has happened? इसका ये मतलब है कि proprietor का कुछ personal income आया है.
वो कैसा आया है, उसका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होके वो पैसा बिजनेस में आ गया। तो उसने क्या किया, उसने ले लिया उसका पैसा? नो, ही हैज रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसका मतलब है वो बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल जैसा ये वाला इंट्रोड्यूस कर दिया। So this adjustment says that 40,000 is additional capital। तो मैंने ये बात बताया कि आपको फ्रेश कैपिटल यानी ड्राइंग्स आपको डायरेक्ट सा नहीं मिलेगा क्वेश्चन पे, इसी तरह का एडजस्टमेंट्स वो देगा। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग। सो यहाँ पे आपको ये वाला समझ में आया कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने से इनकम मिलेगा बिजनेस को, पर ये वाला इनकम प्रोपराइटर का है, उसका पर्सनल इनकम है, पर वो क्या कर रहा है, इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट और रिटेन कर रहा है। सो दिस विल बी अंडर द फ्रेश कैपिटल। ओके, प्रोपराइटर took 2,000 per month for meeting the family expenses। so what is the drawings, ये वाला होता है drawings, 2,000 per month ले लिया है। so between that particular year, 1 year के लिए he has taken so much। is that clear to everybody? yeah, that will be debit, that we will do it at the end. Okay, we will be doing it at the end. Okay, perfect. So now let us go ahead and do the illustration number 3. Can you all start doing along with me? We will be preparing the statement of affairs. Okay, what will we be doing? हम क्या करेंगे अभी? Illustration 3 में हम statement of affairs prepare करेंगे दो date के लिए. Okay, in one shot we will be preparing for both the dates together. Okay, it will be as on. All of you please see very carefully. So here it will be 2021. Here it will be 2022. This side will be the assets and this side again 2021 and 2022. And this side will be the liabilities. Right? So let us go ahead and do this question. Very good. So the first asset, along with me, everybody, can you start doing it? Very easy. Building. The first asset comes to building 1 lakh rupees. Correct? इसका closing balance क्या होता है? 2.5% is the depreciation rate. So you should subtract it. 97,500. Now, my dear students, आप working notes open करना पड़ेगा. Okay? You should open the working notes since I am doing it in a single place. यही पे मैं सब कुछ दिखाती हूँ. But you are supposed to open the working note. So depreciation will be building 1 lakh. So you should write building, that is 1 lakh minus 2.5%, which gives you 97,500. This is for the building. So here you should say working note 1, cross reference dena hai. Okay. The next one is furniture. ये वाला opening balance है 50,000. फिर working note में फर्नीचर का 50,000 माइनस 10% है, so 45,000 आएगा. This is from your working note number 2. Here, everybody. Now the third one is inventory. Third one होता है, it is given to you in the question. Inventory का कुछ भी adjustment नहीं है, just put it. Okay. Okay, it is illustration number 3. Okay, this is not Rakesh. Okay, Pavan, very good. Inventory value है 1,20,000 and 2,70,000. Clear? And then हमारा debtors value है 40,000 and 90,000. उसने दे दिया 40,000 दे दिया और 90,000 भी दे दिया. Very good. और है next value cash at bank. वो values भी आपको ready है 70,000 and 85,000. Okay? And now we are going to go down. Cash in hand भी दिया है. Cash in hand है 1,200 और 3,200. ये वाला हो गया. अभी liabilities में दो liability है, सिर्फ दो liability है, एक है loans और एक है creditors का balance. Now loans का balance आपको दे दिया है 1,80,000. 1 lakh है opening, 80,000 है closing. उसी तरह का creditors balance है 40,000 है और 70,000 है इस तरह. Now कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर लेना है. All of you there with me? Can we start?
Calculate and tell me what is the total balance is this side. First do 2021, okay? First tell me the total for 2021. Total है ये Sri Krishna 3,81,200 is the total, right? 3,81,200 is the total. So what is the capital value? खुशी इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस लिखना है या बिकॉज आप ओपनिंग भी कैलकुलेट कर रहे हो और क्लोजिंग भी कैलकुलेट कर रहे हो. ओके सो 1,02,41,200. ओके तो आप सभी को मिला है ये वाला 2,41,200 इज द आंसर. ओके नाउ व्हाट इज द बैलेंस दिस साइड. आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू सभी आपका कैलकुलेटर्स को लेके प्लीज कैलकुलेट करके बताओ. 5,90,700. Krishna is very fast. 5,90,700 और यहाँ पे आता है 150 जैसा प्राप्त. 4,40,700. ये वाला आंसर्स आपको मिला है. एवरीबडी गॉट दिस. ओके सलेहा गुड. पवन गुड. कृष्णा जय गुड. श्री कृष्णा गुड. तन्मयी गुड. प्रप्रीत गुड. सिंपल. ये वाला असेट्स को पोस्ट करके लाइबिलिटीज को पोस्ट करके यू आर सपोज टू डू द बैलेंसिंग फिगर. सो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे. ओके यू शुड डू एवरीथिंग इट्स द सेम. अभी नाउ द नेक्स्ट वन विल बी ओके अक्षित गुड. नाउ द नेक्स्ट वन विल बी okay the next one will be come please all of you see how will you find out the capital profit or a loss. what you should do wait I'm coming. वो प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको वो एडिशनल कैपिटल LIC मैच्योर हुआ ना that will be your additional capital and he has taken for personal expenses वो होता है आपका ड्राइंग्स. तो क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ. आपको फिर ये वाला आपका प्रॉफिट है या लॉस है यू पीपल नीड टू फाइंड आउट. कैन यू पीपल डू एंड टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस. कैन यू ट्राई. आप क्लोजिंग बैलेंस को लेके व्हाट यू शुड डू यू शुड पुट इन द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला में उसको फाइंड आउट करना है. सो आई विल डू लाइक दिस. ओके क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस है 4,40,700. इससे आप ड्रॉइंग्स को ऐड करते हैं. सो हाउ मच है ड्रॉइंग्स का वैल्यू है 2,000 पर मंथ इनटू 12 मंथ्स 24,000 ऐड करते हैं और लेस एडिशनल कैपिटल. LIC का मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 40,000 है. सो द वैल्यू इज कैन समबडी टेल मी व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वैल्यू. Pavan Yadav, you are telling me what? You are telling me, first tell me this value. Very good. So it comes to 4,24,700. ये तो actual capital आपको मिला है. But what is your opening capital? 2,41,200 is the actual opening capital. So this value is more. तो आपको मिलता है profit. How much is the profit? Can somebody tell me? Pavan, very good. Pavan has got the profit already. You understood the concept? Very simple. 1,83,500 is the profit. Prata, Pratik, very good. Paradeep, very good. You also got it. That's all. Simple है. Okay? But my dear students, ये वाला presentation आपको heading में लिखना है. Statement showing computation of profit or loss for the year. इस तरह का heading होनी चाहिए. उसके नीचे क्लोजिंग कैपिटल ये वाला ऐसा लिखना है. पर्टिकुलर्स है अमाउंट है. ये लिखने के बाद फाइनली आप उसको प्रॉफिट या लॉस ये वाला बताना है. इज दिस क्लियर. प्रेजेंटेशन आपको ध्यान से करना है. यू पीपल हैव टू डू द प्रेजेंटेशन करेक्टली. अगेन एक्सप्लेन द लास्ट वन. ओके दिस पॉइंट सत्या दैट इज योर डाउट. ओके this point, see when you put the formula, okay, using the formula you are getting a capital.
that you should compare it with the already existing capital. This capital you have found out that is okay. After doing this particular value, this capital should be compared with the one that you have arrived. If your formula capital is more, okay, I'm calling this as formula capital. This is actual capital, okay? If formula capital is more, then it is a profit. If formula capital is less than the actual capital, then it is a loss, okay? जो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट करके इस कैपिटल को अराइव करते हो, वो आपका एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा है, आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, वो कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। ये वाला है आपका अंडरस्टैंडिंग। ओके सत्या, यू अंडरस्टूड? ओके, now good, we are going to take the doubts for the next 5 minutes and then I'm going to go back ahead with the illustrations. Okay, yeah, 12 into 2000. No, the drawing is 2000 per month, no? Sri Krishna, Pawan, tell me what is your doubt? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Pawan. मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम, आपने शुरू में जो लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर कराए थे मैम, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट के, Correct. मैम उसका जो मैम क्लोजिंग बैलेंस था, मैम उस क्लोजिंग बैलेंस के हेड को जो अकाउंट का हेड होगा उसको क्या कहेंगे? Okay, मतलब balance मैम जो brought ट्रायल बैलेंस down. हेड्स ऑफ अकाउंट आते हैं ना मैम, उस वो क्या कहते हैं, सन्डे डेटार्स नहीं को मैम, जैसे क्लोज हम्म, वही नहीं है। मैम, मेरा डाउट ये है, जैसे आपने डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया था मैम, हम्म। उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस का नाम क्या होगा? वो सन्ड्री अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटार्स, इधर रिसीवेबल्स यानी डेटार्स बोलेंगे वो सन्ड्री डेटार्स का बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिटर्स का बैलेंस में बोलेंगे इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी पेएबल्स। इधर ऑफ द नेम्स विल कम। हो गया क्लियर? कहेंगे ना सॉरी। मैम, ये पूछ रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंसेस को कहेंगे ना, ये जो आप बता रही हैं अभी? क्लोजिंग बैलेंसेस का ही मैं बता रही हूँ। अकाउंट हेड कौन सा है उसी नाम पे आपको ट्रायल बैलेंस में वो आएगा बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है सन्ड्री डेटार्स का, ट्रायल बैलेंस में आएगा यस, डेटार्स 10,000 डेबिट साइड पे। हो गया। यस मैम, यस मैम। ओके मैम, ओके थैंक यू। पवन, ओके थैंक यू। खुशी? या मैम, थैंक यू। या हेलो। खुश, हेलो यस खुशी, या हेलो। मैम, हमने बिल्स पेबल को डेबिट इसलिए किया है ना क्योंकि हम बिल्स पे कर देंगे तो हमारा क्रेडिटर कम हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, और बिल्स पेबल डिसऑर्डर को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि हम जब वो बिल्स पे ही नहीं होगा तो क्रेडिटर वो एज इट इज रहेगा। बैलेंस, यस। ओके, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाय तन्मय। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, my doubt is in the illustration 3, it's like in all the other sums, they have given to find out the profit. In the sum, they have only given prepare the statement of affairs. Then It is read the in, illustration 4. no, ma'am, I understood the question. Okay. So I am asking you that if we do it until the balancing figures It's without enough. doing the profits, it's enough, no? But in the exam, no, they'll ask you both. Okay. Like Thank in you. the textbook, they'll not bifurcate it, they'll ask you both. Okay? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. It's okay. Then, others? You're very clear with the question? Sunil, can we prepare inner column instead of statement of affairs? Inner column क्या है? You have to prepare statement of affairs, no? Okay, Sunil, please tell me what's your doubt? मैडम, मैं क्या बोलता हूँ, ये प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स वाला जो है वो समझो 1 ईयर में 1 लाख रखा है हम लोग ने, नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू है 1 लाख, मतलब हमारा कोई उसमें से बैड डेट्स नहीं हुआ है, तो Okay. दैट विल बी अ सेपरेट अकाउंट, विल बी केप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। Yes, of course. ठीक है। अच्छा, उसमें एक साल में 20,000 मिल गया, बाकी 80,000 विल बी कंटिन्यू इन दैट प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। Yes, perfect. मतलब and that will be a separate account, provision of bad debts will be the separate account. एग्जैक्टली आप रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, आप बिजनेसेस में जाके देखने से प्रोविजन वाला एक सेपरेट अकाउंट में ही होता है। they'll show it as a separate account only if there is ठीक any है। bad debts उस ईयर में
वहां से पैसा लेके बैड डेट्स को हटा देंगे और वो बैलेंस रिड्यूस हो जाता है. ठीक है मैडम, ठीक है, राइट राइट. ओके फाइन. अदर्स? Who is this? Who is unmuted? All clear, Prata? Okay, good. Okay, you're doing very good. All of you are doing, following it. Okay. All clear. Hello, ma'am. Hello, Amala. Amala Reshma. Tell me if you have any doubt. How many questions will be asked in exams? This is a good question about this chapter. What we'll do, see, if we are able to like finish this off fast, the next class also we are doing the chapter number 9 only. Okay. So what I will do is I will bring the past two question papers and we'll see how much has come from, okay, and we will see how much has come from the chapters that I have taught you. Chapter number 3 hai, 4 and chapter 9. Okay. Okay. So we will do. And then you will understand. Okay. I have done 3 of illustrations. What illustrations you have done? In creditors, purchase return is getting debited. Okay, Amala, why it gets debited is when you purchase goods from the creditors, the balance increases. Correct? When you give back their goods, should you pay for that amount? No. So that balance will get reduced. So the creditors balance to that extent will come back, will come down. Is that clear, everybody? Okay, good. So now what I'm going to do is, since this concept is really easy is, so I am going to show the question for illustration 5 and fatafat I'm going to give you just 5 minutes. You people have to compute and tell me. Okay, all of you please see here illustration number 5. Let us read. The income tax officer on assessing the income of Shri Moti for financial years 2021 and 21-22 feels that Shri Moti has not disclosed the full income. He gives you the following particulars of the asset. So what you have to do, prepare fatafat. What you should prepare? You should prepare statement of affairs, correct? As on 1/4/2021, as on 1/4/2022. So you people have to prepare the statement of affairs, okay? And you should post everything and find out. See, my dear students, here they have not prepared using statement of affairs, okay? But if you want, you can prepare that, or you can follow just assets minus liabilities. They have posted all the assets and then they have completed, they have subtracted this, okay? So I will be showing you only the question. Can you people start doing it? Yes? Can you people start doing it? I'm sharing the thing. Good. So please start doing this particular question. And you people have to tell me what it is. I am giving you 5 minutes to do this. Yes, everybody doing?
So 1/4/2022, 2020 May, you have the assets. So take all the assets, cash in hand, inventory, debtors, land and building, wife's jewelry. These all will be your assets. Very good. And then minus liability. And then minus liability. New people will be working out and telling me. I will be doing what is the main part, okay? Illustration 5, 2020 and 2022. Okay, now I'll just write only the capital balance. Okay, good. I can see some answers coming up. So let us check what the answers are. Yes, wife jewelry will be added in assets. Harshvardhan, yes. ஒரு டவுட் மேம் ஏன் சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அசெட்ல இருக்கு சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ் அசெட் தானேமா சன்ட்ரி டெட்டார்ஸ்னா என்ன நீ அவங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிருக்க அவங்க உனக்கு பணம் கொடுக்கணும் சோ அப்ப அப்படி எப்படி வரும் அது அசெட் தானே உனக்கு நோ ப்ராப்ளம் அமலா ரேஷ்மா நீ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா நீ வந்து ஜாஸ்தி practice பண்ணணும் so basically what you have to do is from the basics why this is an asset இது ஏன் asset சொல்றோம் இது ஏன் liability சொல்றோம் இது ஏன் capital சொல்றோம் இதுக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கும் இதை வந்து நீ திருப்பியும் practice பண்ணாதான் வரும் no problem சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இன்னமும் நல்லாவும் படிப்பாங்க பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் வந்து ஏன் அது அப்படின்னு காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகேவா சோ இது பண்ணு ஓகே பவன் வெரி குட் आपने तो कर दिया super wait let me do wait Saleha Fatima, okay, good. Saleha Fatima has given me the capital balance value 3,13,000, madam, 2020 May, or 5 lakh, okay, Akshit, very good. 5,65,000, madam, in 2022. Okay, so now everybody, have you got this? Owing, Shri Krishna, what is that owing? I don't understand. Paridhi Sharda, oh, you've also given me. Okay, good. Fine. தமிழ் பேசலாமா மீன்ஸ் ஓகே இஃப் உங்களுக்கு சுத்தமாவே புரிய மாட்டேங்குது பிகாஸ் நான் ஹிந்திலயும் சொல்றேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் தமிழ்லயும் சொல்றேன் ஓகே so 3,13,000 okay good so now everybody have got the answers as 3,13,000 and 5,65,000 now let us read one last adjustment and then go ahead I will just close this thing okay see all of you please see here during the 2 years domestic expenditure was 4,000 per month okay there is no additional capital, but there is domestic expenditure. So the meaning of domestic expenditure is nothing but it is drawings. Okay. What it is? Drawings. Okay. So you have drawings given to you in the question. Now, my dear students, let us first calculate what is the profit. Okay. Now let us calculate what is the profit. Now drawings. Okay. What is the closing capital balance? Closing capital balance as of 2022 is 5,65,000. With this, I am supposed to add the drawings. Can somebody correctly tell me what is the drawings value? 4,000 per month. So it will be 4,000 into 12. Correct? Am I right? Yes? Shall I write the value? Okay. Shall I write the value? What is the value? 4,000 into 12, 48,000. Correct? No, because all of you please see. No, because what is the thing? It is for 2 years. 2020 and then 2022. So for 2 full years, he has taken the drawings. 2 full years, he has taken the drawings. So this will become 96,000. Why, madam? Why are you taking for 2 years? Because 2 years are there. It is given to you clearly in the question that the income tax officer has found out Moti's books for 2 years, 2021, 22. So this is the main crux of the subject. So now if you add, what is that value you are getting? 1, 10, 16, 6,61,000. Correct? How much?
6,61,000. Previous year, why you cannot take? It is for calculating the profit only, no, Sri Krishna. If it is bad debts recovered, that kind of entries you cannot take. This you can take, okay? This is the formula capital, correct? What is the actual capital, ma? 3,13,000. This is actual capital. So since the formula capital is more, you are getting a net profit. What you are getting? You are getting a net profit. Net profit kitna hai? How much is the net profit? Can somebody tell me? For both the years put together, the net profit? No. Prab, that is not the thing I'm asking. Just subtract this and tell me what is the answer. That is what I'm asking, no? This comes to 11 minus 3 is 8, 5 minus 1 is 4, 3 minus 3. 3,48,000. Correct. Till this, everybody, did you get the answer? Ye wala, it is the normal thing that we are doing. Satya, are you there? Amala, have you got these answers? The net profit? Now, what is it? Now, this is the actual profit for 2 years put together. But what is that you have done? Question may they have told you, income tax officer has given you 2 other profits. So, what is the profit disclosed to the income tax officer? For the first year, he has disclosed 1,05,000. And for the second year, he has disclosed 1,23,000. So total, how much he has disclosed? He has disclosed 2,28,000 only. So what he has done? He has disclosed correct profit, No. Actual correct profit is 3,48,000. But Moti declare किया है 2,28,000. कितना उसने नहीं डिक्लेयर किया? How much he has not declared? He has not declared the difference, which is 1,20,000. This is the value of the income he has suppressed. Suppressed का meaning क्या है? नहीं बताया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. वो कैलकुलेशन है 1,20,000. Very simple. 1,20,000. Yes, Akshit. I'm unmuting you. Kindly ask me, what is your doubt? Hello, ma'am. I'm sending answer what I done. Some you gave me. Okay, very good, Akshit. I got 1,20,000, ma'am. That is the answer. Very good. Next, Piyush. हेलो Yes, Piyush. मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे आपने इसमें लोन अमाउंट 2 ईयर दिखा दिया, तो अगर हम इसमें 3 ईयर भी दिखाएं तो क्या इसमें वैलिड हो सकती है ये? या हो सकता है. सी वैलिडिटी का मतलब ये है कि ये वाला कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आप वैल्यू कर रहे हैं, वो तो कितने सारे इयर्स का भी हम कर सकते हैं, वो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये वाला क्लोज हो गया ना मैम ईयर, और अगला ईयर है ना, उस तरह का डिस्कशंस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम डील कर रहे हैं असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के साथ. वो वाला ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होता है ना. तो कितना का भी इयर्स को आप कर सकते हैं. आपको ये बात ध्यान में रखना है कि वो ड्राइंग्स आपको पर मंथ दिया है, तो आप केयरफुल से इयर्स को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 12 मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैंने इंटू 2 किया, बिकॉज ये वाला 2 इयर्स का कैलकुलेशन है. ओके जी मैम. मैम, एक और चीज, जैसे इसमें दिखा शो किया हुआ है लोन अदर, अगर इसमें लोन में अगर पेनाल्टी लगे तो क्या पेनाल्टी भी इसमें शो कराई जाएगी? नहीं, वो वाला आपका P&L में जाएगा. लाइबिलिटी जो होता है वो टोटल अमाउंट का है, उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट डाला जाएगा, पेनाल्टी आएगा, वो ये सब वो आप P&L अकाउंट में दिखाना है. ओके मैम, थैंक यू मैम. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. Okay, then wait just a minute. I'm just seeing the capital. Okay, Amala Reshma. So she is not able to understand in this particular thing. So I'll have to explain it in Tamil. So kindly excuse. Capital எல்லாமே capital add பண்றப்போ liabilities ஏமா ஷார்ட்டா explain பண்ணுங்க. Okay. No problem. See, okay. What is the first? Now, people, you tell me what is the basic formula in a balance sheet, the accounting equation. So, எல்லாமே நம்மளுக்கு accounting equationல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரியா? அசெட்ஸ்ன்றது ஜாஸ்தியா இருக்கும் வேல்யூ எப்பவுமே. அசெட்ஸ்னா உனக்கு அதுல இருந்து பணம் வரக்கூடியது தான் நம்ம அசெட்னு சொல்லுவோம். லைபிலிட்டிஸ் வந்து நீ வந்து வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு பணம் பே பண்ணணும்னா. ஸோ
கேபிட்டல்ன்றது நீ அந்த பிசினஸ்ல பணம் எவ்வளவு போடுற அப்படின்ட்டு. ஸோ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் சேஸ் த ஈக்குவேஷன் இஸ் நத்திங் பட் at any point in time எந்த நாள்ல பார்த்தா கூட உன்னோட அசெட் வந்து liabilities plus capital சேர்த்தது தான் இருக்கணும். So that is why when you prepare the balance sheet also, assets are shown on one side, liabilities and capital is shown on the same side. Okay? And every time the balance sheet should tally. Seriya? So now coming back to this question, why madam you are taking assets first and then you are subtracting the liabilities na in the accounting equation ku da basics நம்ம படிச்சது என்னன்னா asset is equal to liability plus capital. இதுல capital கண்டுபிடிக்கணும்னா liability அந்த சைடு கொண்டு வரணும். So asset minus liability capital ஆ மாறும். ஓகேவா? Now coming back, okay, this language is Tamil. She was asking me in Tamil, so I explained her. That is over. Now come back to Harshvardhan. Can you please explain the adjustments again? Which adjustments you want me to explain, Harshvardhan? This is the only adjustment, okay? After you get the capital balance, whatever we have done, हमने जो कुछ किया है अभी तक वही है. The same formula is coming, but only in the drawings में 2 year आ रहा है. So it is for 2 years together. So that is why you're multiplying it into 2. Okay? It is multiplied by into 2. If this goes to 3 years और 4 years भी आता है, आपको into 3 और into 4 करना है. और आपको ये वाला बात में बहुत कंफ्यूजन नहीं लेना है. ये कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस 2 years और 3 years तक जा सकता है. That is okay. Is that okay? Both ma'am, income also. Where is that income? This one. Okay. Please all of you, please listen. We have got the closing capital using the formula. So इतना तक आपका क्वेश्चन नॉर्मल है. Okay? और यहाँ पे आपने आ गया. So closing capital में आपने ये वाला ड्रॉइंग्स को ऐड कर दिया. ड्रॉइंग्स को 2 years लेना है, वो ऐड कर दिया. तो आपका फॉर्मूला कैपिटल कितना मिल गया है आपको? 6,61,000. बट एक्चुअल कैपिटल कितना है? इट इज ओनली 3,13,000. तो फॉर्मूला का कैपिटल ज्यादा होने से इसको हम प्रॉफिट कहते हैं. सो दोनों इयर्स को लेके आपका एक्चुअल प्रॉफिट मिला है 3,48,000. ओके? But in your question, what has happened? He has already given to you for the first year 1,05,000 is the profit he has declared. Moti, second year he has declared only 1,23,000. ये दोनों मिला के कितना है? So 2,28,000 is only declared to the income tax people. But actually आपका बुक से आपका फॉर्मूला से सब कुछ कैलकुलेट करने से आपका मिल रहा है 3,48,000. तो ये 1,20,000 उसने बुक्स में और इनकम टैक्स ऑफिसर्स को नहीं दिखाया है. ये वाला है आपका इनकम सप्रेस हो गया. ओके Satya, I'll take your doubt and then we'll go very quickly to the 6th and 7th question, right? Okay Satya, please tell me your doubt. Ma'am, I can ask Tamil ma'am. Yeah, please ask. Ma'am, அந்த drawings ஆட் பண்ணிருக்கீங்களா மேம், அந்த லாஜிக் மட்டும் எனக்கு புரியல. ஏன் drawings ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நீ கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் நான் போடுறப்போ அது கவனிச்சியா? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல see for the benefit of everybody I will tell you. So she's asking why are you adding the drawings here? Okay? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்க்கு எந்த பேலன்ஸ் இருக்கும்? நம்மளுக்கு கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். சோ என்னலாம் இங்க வரும்? ஓபனிங் பேலன்ஸ் will be on the credit side. கரெக்ட்டா? ஓகே மேம். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட் சைடுல வரும். ஓகேவா? ஓகே When மேம். fresh capital is introduced, capital account increase ஆகும். So என்ன பண்ண போற? By fresh capital அப்படின்னு போட போற. ஓகே? Drawings-னால capital account குறையும், அதனால அதை டெபிட் பண்றேன். ஓகே? ஓகே மேம். This everybody is clear? Okay? Now நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா இத சேமா அப்படியே ஃபார்முலால கன்வர்ட் பண்றேன். So என்னோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருந்து இருக்கு? க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ல இருக்கு my starting point. So closing balance, if this is my starting point, drawings is there on the same side, correct? The same side. ஆமா drawings add பண்றேன். ஓகே மேம். லாஜிக் கிளியர் மேம். Fresh capital is there on the opposite side. So அப்போ இது மைனஸ் பண்ணணும். Suppose here itself, if you are starting with opening balance, okay? Suppose let us take this case. You are starting with the opening balance. I can write it here. I can write it here. Opening balance, you are starting this particular value. So opening balance, with the opening balance, fresh capital you will add or subtract? Add ma'am. Because it is there on the same side. So I am going to add the fresh capital. How much is the fresh capital? There is nothing in this question, correct? Ama ma'am. So you are going to subtract the drawings. So which side you are starting? Which is your starting point? Adha vechudha add or subtract over. So unakku idu puriyalana
Always go to the account. Account is the main. Everybody, I'm telling you, if you don't understand the formula, go back to your account. Okay? If you Okay, ma'am. understand the account, formula becomes very easy. That's all. Okay, ma'am. Ma'am, Okay. இன்னொரு கொஸ்டின் மேம். சொல்லு. லாஸ்டா கேட்கவா மேம்? பரவாயில்ல. கேளுமா. மேம் ஏதாச்சும் டிப்ஸ் சொல்லுங்க மேம். ஏன்னா நான் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Okay. I will tell you the tips towards the end. Okay? Okay, ma'am. Okay, bye. Yes, Sunilji, please tell me. You use the word suppressed income, but in context of income tax, it is undisclosed income. Okay, that's okay. No problem. Right? No, I'm right. No? You are right. You're always right, Sunilji. Thanks. Thank you. Okay. Yes, everybody. Can we go ahead with the next part? All good? So the next one, illustration number 6 and illustration number 7 is quite easy. It's nothing. Okay. It is just basically you have to prepare your debtors account and creditors account. As simple as that. Okay. Shall we very quickly start preparing it? And you people will be telling me the answers. So illustration number 6 is preparation of your debtors account. That just 2 minutes I'm going to give. I'll share the screen for everybody. So for the benefit of everybody start doing it very quickly. So the next one, coming back, the 6th point, 6th illustration will be, very good. This is this. Calculate the bad debts from the given information. That's all. So bad debts, no provision, no nothing, bad debts. So bad debts will come into your debtors account only. So there is nothing in the books of, I will be telling all of you, please simultaneously prepare kar do ye account. In the books of so and so, it will be kya account hai? Debtors account. आप debtors account heading लिख सकते हो, नहीं तो receivables लिख सकते हो. पर question में क्या दिया है? उसने दिया है debtors. So debtors लिख दो heading. Okay? Pawan, is it okay? ये वाला debtors इसी तरह का ट्रायल बैलेंस में जाएगा. Now come back. First one है opening balance. Opening balance किस तरफ आएगा debtors account में? Debtors account का होता है debit balance. So the opening balance will come on to the debit side. Very good. Or second one है closing balance. Closing balance will come on to the credit side. Very easy. Put it on to the credit side. Closing balance है 7 lakh rupees. Third one क्या है? Amount received in cash. Amount आपको receive हुआ है 6 lakhs. Which side will you write? When you receive amount, you will be writing by cash received on the credit side. क्यों? ये वाला cash receive करने से आपका account balance कम हो जाएगा. Is that clear, everybody? And then all of you please see. Discount allowed. अगला है discount allowed. Which side will discount allowed come? Discount allowed will come on to the credit side because it has the effect of reducing. Akshit and Pawan, I will take your doubts. Please wait. Credit sale hai 11 lakh and 40,000. Which side will credit sale come? You people tell me. Which side will credit sale come? Everybody, you are busy doing the question. No problem. Two credit sales. It comes to 11 lakh and 40,000. Debit side it will come. Very good. I am happy everybody is telling. Then bills receivable hai. See, all of you please see, if the word only bills receivable is given, it means that bills receivable is accepted. आपका डाउट आएगा, मैडम ये bills receivable ये accepted है या dishonored है? कुछ भी नई इंफॉर्मेशन दिया तो वो है accepted. उसको लिखो क्रेडिट साइड पे. बिल्स रिसीवेबल है 3 लाख रुपीस. दैट्स ऑल. और आपको क्या करना है अभी? बैड डेट्स आपको फाइंड करना है. बैड डेट्स किस तरफ आएगा? क्रेडिट साइड में ही आना है. नाउ कैन समबडी टेल मी द टोटल ऑफ दिस? एवरीबडी, 5 lakh plus 16 lakh and 40,000. This is also 16 lakh and 40,000. This comes to 10, 16, 16 lakh, 10,000 minus this. 30,000 is your balancing figure, right? Am I right? Yes? That is the balancing figure. Yes, good. Everybody got the answer? Such a simple question. They are insulting you people. Okay? Very good. Now let us go ahead with the second question. Okay. Paridhi Sharda, I'm coming back. That's a valid doubt. Okay?
So valid doubt, na Paridhi, you can write this here also, no problem. But since I want to highlight that answer to you, so I'm showing it like that, okay? Amala, yeah, madam, cash received, we are taking it in the credit side because cash நீங்க ரிசீவ் பண்ண உடனே டெட்டாஸ் வேல்யூ குறையும், கரெக்டா? அவங்க 5000 ஒன்று கொடுக்கணும், அதுல ஒரு 1000 கொடுக்குறாங்க, அப்போ பேலன்ஸ் குறையுமா அப்படியே இருக்குமா? அவங்க கொடுத்ததை வச்சு குறைஞ்சு போயிடும். ஸோ குறைஞ்சதுன்னா ஆப்போசிட் சைட்ல போஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்காக கிரெடிட். வாட் பவன், வாட் இஸ் யுவர் டவுட் பவன்? हेलो मैम। या टेल मी पवन। मैम एक्चुअली मैम 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 एक्चुअली एक्चुअली मैम मैम पहले क्वेश्चन मैम जो मैम बैलेंसिंग फिगर जो आती है मैम उसको हम क्या कहते हैं मैम? मेरा क्वेश्चन ये था आपसे पहले। ये वाला बैलेंसिंग फिगर बैड डेट्स है तो मैम डेटर्स अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर आती उसको। है मैम, अगर यही बैलेंसिंग फिगर अगर मैम डेबिट साइड में डेबिट साइड में आएगा तो क्या होगा, उसका ये वाला हो सकता है कि कुछ डिसऑनर है, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस है। मैं ना आपको इलस्ट्रेशन 8 में आपको पढ़ाती हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। सो ये बैलेंसिंग फिगर सभी समय ये क्लोजिंग बैलेंस ही होने का जरूरत नहीं है, वो क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, नहीं तो बैड डेट्स हो सकता है, नहीं तो कैश रिसीव्ड अमाउंट हो सकता है, और नहीं तो इसी में किसी भी आपको बैलेंसिंग फिगर में आता है। वो आपको कैसा पता चलेगा, क्वेश्चन पढ़ना है। सो कौन सा फिगर आपका मिसिंग है वो मुझे यहाँ यही पे आएगा। डाउट था। ओके, आप क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि कौन सा वैल्यू मिसिंग है, वो आपको इस तरफ से आपको उसको फाइंड आउट करना है। वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, मैंने तो फॉर्मेट दे दिया ना, उस आइटम्स को आप माइंड पे फिक्स कर दो। तो डेबिट में वो वाला आएगा तो वो वाला बैलेंसिंग फिगर होएगा। ओके, यू गॉट द पॉइंट? आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से भी समझ में आएगा, दैट्स इट। Now coming back, Shri Krishna, only one value they will tell. Two values you cannot find out. One value only you will be able to find out from one account. Okay? Yes, ma'am. Big doubt था मैम केवल। Thank you, ma'am. Okay, pa. Okay. Yeah, Amala, you have to think from that angle only. So yes, Sunil. मैं क्या बोलता हूँ, अगर बैड डेट रिसीव्ड होता है तो वो तो कैश रिसीव्ड हो गया, तो दैट विल बी इन बाय कैश रिसीव्ड ओनली। बट वी हैव टू शो दैट वी हैव रिसीव्ड ऑफ द बैड डेट्स ऑफ द लास्ट ईयर या उससे पहले वाला है, तो उसमें बाइफरकेशन करना पड़ेगा बाय कैश रिसीव्ड में। बराबर है? बराबर। यू आर नॉट गोइंग टू शो। यही आपका कॉन्सेप्ट ये है कि बैड डेट्स रिकवर होने से आप वो डेबिट डेटास अकाउंट में नहीं लेके आना है, आपका कैश अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड करके एक सेपरेट अकाउंट होता है, यू विल ओपन इट फॉर दैट ईयर। ओके, ठीक है। प्रीवियस ईयर का डेटास का बैलेंस का कुछ भी आप अभी चेंज नहीं कर सकते। राइट। Okay, now illustration, I got the credit purchase amount. Very good. I'm very, very happy. Now let us go ahead and see the next question, which is your illustration number 7. Okay. Now everybody come ahead. We'll go. I will just show you the account. You have to do. Oh, I showed you the answer also. I teach you. You do. Opening balance of creditors, closing balance of creditors, payments made in cash, discount, just 4 things. That's all. What is that they are asking you? Credit purchases. Pawan, you tell me credit purchases. Creditors account में किस तरफ आएगा बैलेंसिंग फिगर? क्रेडिट में आएगा नहीं तो डेबिट में आएगा? You tell me, Pawan. Good, Paridhi. Correct. Harshvardhan, why are you telling it is debit? No, this is the mistake everybody is making. I am talking about creditors account. ये है अभी हम credit debtors account किया है, हम we are supposed to do the creditors account. Okay, creditors account में सब कुछ बदल जाएगा. It will become opposite. Creditors कौन होता है? They will be your liability. उसका बैलेंस कैसे होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट परचेजेस करने से क्रेडिटर का बैलेंस इंक्रीज होता है, सो यू हैव टू पुट इट ऑन द दिस साइड। ऑल ऑफ यू प्लीज सी, ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आता है। हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस एवरीबॉडी? ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख रुपीस और क्लोजिंग बैलेंस है 5 लाख रुपीस।
और कौन सा है नेक्स्ट वन है 8,50,000. 8,50,000 क्या है? पेमेंट. यू हैव डन पेमेंट फॉर द क्रेडिटर्स, so it will be to cash. क्यों? Why I am putting it in the debit side? Because when you pay to the creditors, उसका balance कम हो जाएगा. It will have a credit balance, so you are going to write it on the opposite side. How much it is? 8,50,000. 8,50,000. Okay, good. Next, discount received. This will come this side. We have already studied how much? 20,000 is the discount received. So how much is this? Your debit side is more 13,70,000. 13,70,000. अभी आपको आ रहा है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड. ये क्या होता है? It is already given to you in the question. आपको क्वेश्चन में दिया है वो क्रेडिट परचेजेस है 9,70,000. That's all. Very good. Okay. Amala, did you understand? Satya, Amala, see credit purchases. Now we are talking about creditors account. So creditors account la vandu balance ellame credit side la irundhu irukum. Increase ஆச்சுனா அந்த அக்கவுண்ட கிரெடிட் பண்ணுங்க, டிக்ரீஸ் ஆச்சுனா அந்த அக்கவுண்ட டெபிட் பண்ணுங்க. சோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க பார்க்கணும் ஒரு क्वेश्चन. இப்போ டெட்டார்னா அவருக்கு டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும். சோ நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணனும்னா அதை டெபிட் பண்ணனும், டிக்ரீஸ் பண்ணனும்னா அதை கிரெடிட் பண்ணனும். சோ இந்த எஃபெக்ட் எப்படி வரும் நீங்க பாத்துக்கணும். ஓகேவா? அது இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அதை வச்சு தான் நீங்க அந்த சம்ம क्वेश्चन சால்வ் பண்ணணும். யா good. So everybody is able to answer and I am really happy and we are ahead of time also. Just 12:40. I will be completing another big question for the next 20 minutes, which is your question number 8. Illustration 8 के जैसा ही आता है. Illustration 8 is a complete question wherein you are supposed to prepare your working notes and you are supposed to do trading account, P&L account and statement of affairs. So still now, whatever you have seen, okay, we have done it in parts. So we have found out closing capital, then we have found out profit, and then we have found out undisclosed income, and then we have done just creditors account, and then we have done debtors account, correct? Now we are going to do everything together. Clear everybody? So how am I going to do? So I will teach very clearly. First, we need to read the question very clearly. Okay, till we read and understand the question, it is very difficult for us to proceed ahead. When you do everything in small bits and pieces, it will be very easy. When you have to do everything together in one particular go, it might be little difficult. But trust me, if you practice, आप practice करने से ही accounts बहुत easy होता है. Don't study accounts. Study करना नहीं है accounts को, आप workout करके practice करना है. Satya, you were asking tips for me or from me. I'm telling this for everybody of you together. Try to improve your vocabulary. You have come from a different medium, may it be Telugu medium, may it be Tamil medium, may it be a Hindi medium, no worries. Start reading, develop your vocabulary. That is when you will try to understand what is happening. So by default, we are communicating in English. That you need to understand. Okay, so start reading books and you can improve. The second thing is how to improve working out on accounts is the more you work out, accounts will seem that easy. So if I'm teaching you today, I would have worked it out 10 times and then only I'm able to teach you. Okay, so it does not come very easily. I want everybody of you to take the effort, sit down and work. Okay, I am from Tamil Nadu, born brought up in Tamil Nadu. I am a Telugu person. Okay, so I know almost all the languages, not all these languages. So I'm able to clear your doubts in that. Fine. What you should understand is what languages I am speaking. That is not relevant. What you should understand is how you are supposed to prepare for your accounting perspective. Right, everybody? Now we will go ahead with the question illustration 8. I don't want anybody to disturb now. After that is over, I will take all your doubts. Okay. Okay. Now coming back, everybody, we will be talking for all subjects tips I give you when I'm leaving the class. When of my last class, I will sit and I will tell everything. Okay. So let us, you people have to cooperate so that I will be able to finish the class within time, before time, and then it will be easy for us to discuss the other parts. Okay. Yes.
Illustration 8, everybody with me? You don't have to do anything, just look at me, just look at the screen. Okay. A. Adamji keeps his books on single entry basis. So the first question or the first sentence says that it is a single entry basis question. The analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given below. So you already have what you have before you. You have the cash book given to you. Madam, cash book is already given to you. Yes. So half the work is done. You need not prepare a cash book again. Is it clear to everybody? You need not prepare cash book again. What you need to prepare are the other accounts. और कौन सा accounts है? Apart from cash book क्या होता है आपका? Sundry debtors accounts है, creditors account होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. सो यूजुअली आपको एक बिगर सम आने से इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको वर्किंग नोट्स में ये वाला जनरली क्या प्रिपेयर करते हैं, हम कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं, डेटास को प्रिपेयर करते हैं, क्रेडिटर्स को प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला डेट में हम प्रिपेयर करते हैं. क्यों मैडम ओपनिंग वाला डेट में प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस चाहिए. इज दैट क्लियर? सो बाय डिफॉल्ट ये 4 वाला अकाउंट हम प्रिपेयर करना है. पर इस क्वेश्चन पे आपको ऑलरेडी कौन सा दिया है? क्वेश्चन पे ऑलरेडी आपके पास है कैश एंड बैंक अकाउंट. सो उसको फिर भी आपको प्रिपेयर करने का वो कुछ जरूरत नहीं है. सो नाउ कम बैक. रिसिप्ट्स है. On the receipt side, that is your debit side, bank balance is there. What is this, my dear students? This bank balance is nothing but the opening balance. Okay, opening balance of bank is 2,800. Okay, now please come here. Received from sundry debtors. That means what? You have received cash from sundry debtors. Where will this amount go, everybody? Where will this amount go? This amount will go to your sundry debtors account on the credit side. Why, madam? I receive cash from sundry debtors. When I receive cash from the debtors balance reduces. So I am supposed to credit this value in the debtors account. Okay. Now, madam, cash sales is given to me here, madam. Very good. Cash sales you have. But credit sales, do you have the figure? No. So what you should do? I should prepare which account to know the credit sale balance? I should prepare the sundry debtors account. Pavan, you asked me, no, what will be the balancing figure, correct? So here it will be, you should be preparing the sundry debtors account to find out the credit sales. Cash sales ka value is given. You should find out credit sales and total sales. Cash sales plus credit sales होता है total sales. So trading account में आपका सेल वैल्यू होता है कैश और क्रेडिट. यहाँ पे कैश सेल्स ही है आपके पास. So what you should do? I should find out the credit sales and then take both of them. Okay. Capital brought during the year. इसका मतलब क्या है? फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड है ये वाला. सो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कहाँ पे आता है? वो एंड पे आता है. ओपनिंग कैपिटल में मैं उसको ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल वैल्यू को मैं अराइव करना है ना, वहां पे लेके जाएंगे हम. इज इट ओके? सो दीज आर ऑल द डेबिट. वन मोर है, एक और है. इट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे आता है? ये P&L अकाउंट में इनकम है. सो इट विल कम इन द P&L अकाउंट. ठीक है, क्लियर है? अभी पेमेंट्स को देखते हैं. पेमेंट साइड पे क्या है? पेमेंट्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स है. तो ये वाला आपको द मोमेंट यू सी पेमेंट्स टू क्रेडिटर्स, व्हाट यू शुड ओपन? सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करना है. व्हाट यू शुड डू? सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करना है. वेरी गुड. नेक्स्ट है सैलरीज. मैडम ये सैलरीज कहाँ पे आएगा? नाउ वी आर सपोज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट. उसमें आ जाएगा. सैलरीज है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इट विल कम अंडर योर एक्सपेंसेस साइड. नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, वो P&L अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड. रेंट और टैक्सेस है वो आपका एक्सपेंस है. दिस इज ऑल्सो योर एक्सपेंस, सो यू विल बी टेकिंग इट इनटू द P&L अकाउंट डेबिट साइड. Now the drawings come here. This will be handled as a part of your capital balance. So ये वाला drawings है और ये वाला capital brought in है. ये दोनों आपका capital account में जाएगा. यहाँ देखो cash purchases दिया है, पर आपको credit purchases figure value को arrive करना है. Okay.
और दिया है क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये दोनों जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग डेट में। The particulars of other assets and liabilities have been given to you। ये वाला देखो, sundry debtors का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, ये सब कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएगा। ओके, सो अभी देखो और क्या करना है, और क्या हम फाइंड आउट करना है, नीचे आ जाओ। हाँ, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर and 10% on machinery and furniture and 800 against doubtful debts। ये वाला देखो, what is this? 800 rupees is the provision for doubtful debts। Okay, so where will the provision for doubtful debts come? Just now I explained to all of you. Provision for doubtful debts will not come into your debtors account. It will go into the P&L account, and in the balance sheet it will go. Very good. Now, my dear students, please don't write anything. I am going to do the working note. Working note number 1 is preparing the sundry debtors account। Clear? Sundry debtors account। क्यों मैडम, क्यों हम ये sundry debtors को करना है? क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करना है। वी शुड फाइंड द क्रेडिट सेल्स, सो वी आर कमिंग टू दिस। ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट मैडम विल कम? ओपनिंग बैलेंस शुड कम मैडम। देन व्हाट वी विल हैव? क्लोजिंग बैलेंस शुड कम मैडम। नाउ गो टू द क्वेश्चन। Yeah, go to the question. I will show you very very quickly। अभी देखो, and this particular question come up when you are coming up, my dear students. See here, sundry debtors opening balance, closing balance is given to you. Opening balance is 14,500, closing balance is 17,600. Is this clear to all of you? Then what do we have? By cash received, go to your cash book. The cash book says this much cash you have received from the debtor. So that is nothing but 48,000. Which side, madam, it will come? On to the credit side. That's all. Do you have any discount? Do you have any discount allowed? Do you have any bills receivable? Do you have any bad debts? No, only provision for doubtful debts is given. That will not come here. So, madam, question over. Now, what I should find out, madam? Credit sales I should find out, madam. That is the balancing figure. Can somebody tell me what is the balancing figure? 600, 5, 65, 600, 65, 600. This comes to how much? Anybody? 51, 500. Yes, everybody? 51, 500 is the credit sales. Perfect. Now, can somebody tell कितना है total sales? How much is the total sales? Total sales वो होता है, वो credit plus cash sales होता है। Credit sales हमने find out किया है 51,100. And how much is the cash sales? The cash sales हमारा cash book से आता है 11,000. Okay? What is 51,500? No, Satyapriya, 51,500 is not the right answer. So 61,600 is my total sale value. ये वाला होता है total sales. इसको हम कहाँ लेके जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट पे लेके जाते हैं। ओके, नाउ वर्किंग नोट नंबर 2, ये होता है सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट में क्या क्या आता है? व्हाट विल बी कमिंग? The opening balance will come on to the credit side, closing balance will come on to the debit side, and any cash paid will come on to the debit side. Okay, can we look at the question? Ma'am, it is 62,100. Yeah, okay. Thank you. 62,100. अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। The same thing we are supposed to prepare even for the creditors account. Okay. So first होता है, इसका बैलेंस कितना है? नीचे आ जाओ। So 5,800 is the opening, 7,900 is the closing. 5,800 आता है क्रेडिट पे, and then 7,900 आता है डेबिट पे। और कैश पेड कितना है? पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स है 35,000 यहाँ पे है कैश बुक से, सो वो भी ले रही हूँ डेबिट साइड। इसको मैं आई एम राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड। 242,900, 42,900. Can somebody tell me क्रेडिट परचेजेस का बैलेंसिंग फिगर? ये वाला कितना है क्रेडिट परचेजेस का? 37,100 है क्रेडिट परचेजेस। क्लियर? यहां से हमको क्रेडिट परचेजेस
मिला है, क्या करना है अभी? टोटल परचेजेस, व्हाट विल बी द टोटल परचेजेस? टोटल परचेजेस विल बी अगेन क्रेडिट प्लस कैश, करेक्ट? क्रेडिट कितना आपको आया है? 37,100 क्रेडिट आया है, प्लस कैश परचेजेस आपका कैश बुक में है 12,000, सो वो 12,000 यहाँ पे ऐड करके टोटल है 49,100 हो गया। That's all. From these two working notes, we have found out the total sales and total purchases. Till this clear? किसी को कोई doubt है? Do you have any doubts with this? If not, I will go ahead to prepare the P&L account and the trading and P&L account. They are asking you to prepare what? They are asking you to prepare the trading account, P&L account, and the statement of affairs. So we need to complete the question. So this is like a final question, final accounts. How do you do the same thing? Okay, clear everybody? This is okay. Now we are going ahead and then preparing the important account, which is nothing but the okay. So here we are going to prepare in the books of Adamji. What is that? Trading account. Clear? So trading account may what and all will be coming? What will come in the trading account? In the trading account, we will be getting, I'm just taking it this side. Okay. In the trading account, we will be getting the first thing, opening stock. What is that? Opening stock will come on the debit side, and then you will have the next item is the purchases, correct? And this side will be the sales, and next will be the closing stock. Madam, from where should I take the stock value? Stock value is given to you in the question. All of you please see, very simple question. Stock value inventory is given to you in the question. See here, this is inventory, 3,900 opening stock, write it on the debit side, 5,700 closing stock, write it on the credit side over. Everybody clear? Now tell me, what is the sales, what is the purchases? Sales purchases, we have just now found out, correct? How much is the sales we have found out? 62,100, working note 1. Purchases, working note 2, 49,100, correct? Whatever working notes we have done, from that we have identified. Now everything over, find out the balancing figure here, 67,800. 67,800, so we are getting a profit to gross profit. Aapka balancing figure in the trading account will be gross profit, correct? How much is the gross profit? Can somebody tell me? The gross profit, Pratha, very good, 14,800 है gross profit. इसको हम P&L account में trading account and P&L account एक ही बार आप दोनों account heading में लिख सकते हो. And then bring it like this. Gross profit is 14,800. ये वाला okay? I have just balanced the gross profit and got it into the P&L account. Now what will come in the P&L account? P&L account में क्या क्या items आएगा? इनडायरेक्ट इनकम्स आपको क्रेडिट करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है. मैडम ये इसका इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? हमारा कैश बुक से मिलेगा, करेक्ट? सो कैश बुक में हम जाते हैं, वी विल सी द क्वेश्चन वंस अगेन. कैश बुक में क्या क्या है? इन द कैश बुक वी हैव, ऑल ऑफ यू प्लीज सी, इन द कैश बुक वी हैव, okay, in the cash book we have this thing, interest on investment. So ये वाला 200 आपका income है. By interest on income 200 आप credit में लिखते हो. Clear? अभी payments के side आ जाओ. In the payment side, what and all we have? We have salary 6,500, general expenses, rent and rates. All these three are expenses. So फटाफट we are going to write it on the debit side. So to salary 6,500, to expenses is how much? 2,500. To rent and taxes is 1,500. Okay? But there is two more things. What is that? You should not forget. इसके साथ आपको adjustments भी देखना पड़ेगा. What are the adjustments?
Final accounts provide depreciation 10% on the machinery and furniture, and doubtful debts is also there. So doubtful debts 800, you have to post it in the expense to provision for doubtful debts, or depreciation is how much amount? 10% they are telling, correct? How much is the 10%? See, machinery 7,500 they have given, and furniture 1,200 they have given. So all of you please see here, I'm just showing the depreciation here. 7,500 into 10% is 750. 1,200 into 10% is 120. This will form a part of your working note number 3. Working note number 3, I'm sorry, working note number 3. Okay, yes. I'm just adjusting. There is a glare there. Okay. Working note number 3, what happens is the 7,500 into 10% is 750 and this is 120. So 870. Clear? So this I am just writing it now here. All of you please see, I'm just writing it now here. Depreciation is 870 based on your working note number 3. You people prepare the working note separately and then write. Now don't write. Please follow the question. Clear everybody? So I have posted everything here. Can somebody tell me what will be the net profit or net loss? What is the answer? Net profit or net loss? This comes to 15,000. 15,000. Paridhi Sharda has told me 2,830. Sri Krishna 2,830. Good. It is net profit. Okay. We have got the net profit 2,830. And the final thing is the statement of affairs. Somebody asked me, Madam, can we prepare it together? Yes. Prepare it together so that you will be very sure of not missing anything. Okay. Opening balance, closing balance. In your textbook, if you see, they would have taken this into your working notes separately 2 times, but don't waste time. Put it in the same statement so that you will not miss anything. Okay? Opening balance and closing balance. That's it. Can we go ahead and do it very clearly? Yes, it will come for 10 marks. Now, please go ahead and let us see everything one by one, my dear students. All of you, please see assets and liabilities. I told you always write the fixed assets first. So, it will be on the debit side, machinery, and you will have furniture. Now, madam, opening balance, closing balance, it is the same in the question. But no problem. Opening balance 7,500. Minus depreciation 750. You should not forget this. It will be minus 750. So it will be 6,750. Why, madam? Because depreciation is there. Depreciation you should subtract and write it in the closing balance. The same manner, furniture 1,200, madam, minus 120. I will have 1,080. Correct? 1,080. Is this clear to everybody? They only asked Tanmayi, they asked this, but Tanmayi, you didn't see the working note. Working note opening balance is also asked because you need to find out the opening capital, no? So what I did, instead of doing that in the working notes, I am doing it together. Okay? Yeah, you can. Your answer tallied, Divya Raj, super. Okay, now can we go ahead to the next one? Next one we have the debtors balance, correct? Now the debtors balance is 14,500 opening, 17,600 closing, correct? Now come to the liability side. Creditors balance how much? Let us write that also. The creditors balance, just a minute, I jumped somewhere. Okay, creditors balance opening is 5,800 and closing is 7,900. Good. So I've entered everything. Now next is inventory and investments. So first I will write the investments on the asset side. Investments is 5,000 and 5,000, no change. Okay. And then we have the inventory. Inventory comes to how much?
3,900 and 5,700. Okay, good. Everybody please see what is that next I have to write. I should not forget this. What is that? Bank balances, opening closing balances. So cash in hand, cash at bank. Correct? Now cash at bank we have the opening balance, but cash in hand we don't have. How much opening balance this side? 2,800. But closing balance may we have bank balance also, we have cash balance also. Cash balance is 600, bank balance is 6,400. Okay? 6,400. Harsh Gupta, I need to finish this. Be a little patient with me. Okay? Yes. Now coming back. Yes, somebody has told me the good point. What is that, madam? You forgot to subtract the provision for doubtful debts. 800 you have taken, but you forgot it. Very good. This is not 17,600. When provision is given, you should subtract it. 16,800 is the value. Why? 17,600 minus provision 800. Very important. I told you, no? Provision for doubtful debts will come in two places. One is in the P&L account. The other one is to subtract this particular value from the debtors. Is this clear? Now we have posted everything. Finish. Yes or no? Anything is pending from our side? People who have finished the question, tell me if anything is pending from our side. No, correct? So now, first thing what we have to do, balance the opening balance. Please tell me what is the opening capital balance. I want you people to help me with the opening capital balance. How much is the opening capital balance, everybody? Capital is 65,100. So, they are telling me 65,100 is the capital. Is that correct? 29,100. Okay, 29,100 is the opening balance. Fine. This is 65,100. Okay. Everybody got this? Wait, some people are telling something we are telling. I will only see what it is. What is the balance sheet? Figure is 34,900. I'm sorry, this is not right. 34,900 is the right answer. And the capital balance will be 29,100. Okay? Yeah. Opening is 29,100. Yes, Tanmay, opening. What happened, Tanmay? Now, my dear students, with the opening balance, all of you please see here, Satya, all of you now listen carefully. From the opening balance, what are the things that you people have to add? Can you tell me? This is the normal question. With the opening balance, you will add the profit. Correct? Yes. How much is the profit? 2,830. I got 2,830 here. Then I will add additional capital. Where is the additional capital? Please go to the cash and the bank book here. It says cash and the bank book. In that, see here, capital brought during the year is 6,000 and drawings is 3,600. That's all. So additional capital 6,000 I will add. Creditors, I'll just post it little down. Then subtract the drawings. Drawings is how much? 3,600. Can you people tell me what is the closing capital balance? Yes, what is the closing capital balance? 34,330. Now try, is your statement of affairs tallying? Harsh Gupta, very good. Is your statement of affairs tallying, all of you? So it comes to 230, 40 to 230. That should be your answer, right? Am I right? Everybody got this value? So if you ask me, madam, should I show like this in the balance sheet? No. In your final answer, don't show that. Rather, take it to another working note, do this formula and write this value alone here. Is that clear? You are not supposed to show everything in the same statement. No, don't do that. That is a mistake. Okay. I didn't have place, so I showed it here. You take it to working note number 4.
and then do it. Clear, everybody? We can do it directly. No, directly, Paradhi Shata, you are supposed to do it as statement of affairs only. This is how a complete sum in incomplete records will look like. Okay. Opening capital 29,100. How you are adding all this opening balances asset வந்து add பண்றீங்க அமலா, and ஒரே ஒரு இருக்கு liability, and the creditors subtract பண்ணீங்கன்னா 29,100 வரும். Okay, you can try this also. And yes, with that today's session I am done. You people have to go for the next session also. So I have given you notes for this chapter. I have also given you assignment questions, which is nothing but your practical questions. Okay. Practical questions is given to you. Please try them. Okay, it is quite easy. The next class, the next 1 hour, the first 1 hour or 1.5 hour, we will be completely working out question number illustration 9 and illustration number 10. Fine. With that, we will close this particular incomplete records. And inventory may, there are 2 practical questions. It's quite important that I will teach you the other day. Okay. So Tuesday's class, we will be covering a part of inventory also. Yeah. Thank you so much. And Priya, are you there? Okay, there are 2 doubts I'll take and then finish it off. Priyamvada. Akshit, yes, please tell me your doubt. Hello, ma'am. Hello, ma'am. I have doubt regarding you can explain me that statement of affairs and balance sheet. That's it. Which one you want me to explain? See, statement of affairs is what you prepare for the single entry thing. Okay. Now, whatever it is given here, I have taken it from the question only. So, आपका assets है, liabilities है, balances दिया है, मैंने उसको post किया. पर यहाँ पे machinery का value opening से मैंने depreciation को हटा दिया. So, this is 10% depreciation, 7,500 minus 750, 6,750. Okay. फर्नीचर का बैलेंस ओपनिंग में 1,200 है, 10% हटा दिया, सो 1,080. डेटर्स में मेरा ओपनिंग बैलेंस है, पर क्लोजिंग बैलेंस से मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 है ना, उसको मैंने डिडक्ट कर दिया. सारा की सारा दिस इन्वेस्टमेंट्स वही बैलेंस है, 5,000 आएगा. इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में मिला है, वो ये भी ऐसा आएगा. और फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक में, ये वाला आपका कैश बुक से मैंने ले लिया. कैश बुक में ओपनिंग कैश इन हैंड नहीं था, बैंक बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस में दोनों था. So this is what I have taken. Creditors both are given to you in the question itself. Then what I did, मैं ओपनिंग बैलेंस को फर्स्ट मैंने ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस करके क्रेडिटर्स बैलेंस सब्ट्रैक्ट करके ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को अराइव कर दिया. इसको लेके मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को ऐड करके ड्राइंग्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. कहां से आ रहा है? From where am I doing this formula? Same your capital account only I am doing it. Okay. उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस मैंने कंप्यूट कर दिया, यहाँ पे डालकर ये दोनों को बैलेंस कर दिया. That's all. Your statement of affairs is something similar to your balance sheet. अक्षित, आपने फाइनल अकाउंट्स में जो भी किया ना, बैलेंस शीट को फाइंड करना, प्रिपेयर करना, और आपको एनपीओ में भी आपका वो कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, क्लोजिंग कैपिटल फंड का सब कुछ आपने किया ना, सेम कॉन्सेप्ट है, नेम्स ओनली चेंज. दैट्स ऑल. मैम, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम डाउट, सेकंड डाउट. टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री वो तो आपका थियोरी में आएगा. सिंगल एंट्री इज ऑफ 3 टाइप्स. वन इज द प्योर सिंगल एंट्री, और द सेकेंड वन इज योर सिंपल सिंगल एंट्री, एंड देन यू हैव योर क्वासी सिंगल एंट्री. ओके. Pure simple entry is where, or single entry is where they only maintain the personal accounts. Okay. Can I not have that background noises, please? Okay. So yeah, coming back, I'm just for the benefit of the theory, there are 3 types of single entries. One is the pure single entry. Okay. I'm just rubbing this question, or I'll write it here. One is the pure single entry, which is only the personal accounts. Personal accounts का मतलब है debtors और creditors account. ये वाला कहीं भी नहीं है. Okay. Next is simple single entry. इसमें क्या होता है? You will have the personal accounts and also you will have the what? Bank account. Okay. Bank or cash account. Quasi single entry is where you have personal accounts. Debtors, creditors accounts होता है, बैंक और कैश अकाउंट्स होता है, और कुछ सब्सिडियरी बुक्स भी होता है. So generally
generally any small business person will be maintaining quasi single entry. Okay, so quasi single entry में personal accounts, debtors और creditors का information वो रखता है, कैश और बैंक का ट्रांजैक्शंस का information रखता है, और कुछ सब्सिडरी अकाउंट्स जैसे कि कैपिटल अकाउंट है, नहीं तो सेल्स अकाउंट है, परचेस, इसका भी इंफॉर्मेशन रखता है. So we follow, or rather all the sums that we are doing comes under the quasi single entry. ठीक है ma'am? Is there you take an inventory as opening and closing balance? Yes, Sri Krishna, it is given to you in the question. And Satyapriya, yes, your final doubt. I think we can close the class. மேம் நான் லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தேன் மேம் டிப்ஸ். டிப்ஸ் நான் சொல்றேன், நான் போறதுக்கு முன்னாடி உனக்கு சொல்லிட்டு தான் போவேன், சரியா? ஓகே மேம், தேங்க்யூ ஸோ மச் Okay, மேம். no problem. மேம் யூ ஆர் கிரேட் எக்ஸ்பிளைனர் மேம், தேங்க்யூ. Oh, thank you. Okay, so coming back, see here. मैम ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? आई थिंक यू शुड आस्क, दे आर होस्टिंग इट ऑन द वेबसाइट. आई थिंक मनीष कैन हेल्प यू विद दैट. ओके, सो या अक्षित, व्हाट हैपेंड? अगेन यू हैव अ डाउट अक्षित. कैन वी टेक द नेक्स्ट क्लास योर डाउट अक्षित? ओके, टेल मी. या Ma'am, अक्षित, प्लीज टेल मी. ma'am, methods of capital formation, that alone I can't understand, ma'am. क्या है मेथड्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में? उसका यू डोंट, नहीं नहीं, आप तो थियोरी पढ़ के कुछ और समझ के, ये वाला कॉन्सेप्ट वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इससे आप पहला ये फिर ट्राई करके नोट्स बना के फिर उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो. मैं इलुस्ट्रेशन कह रहा हूँ, इलुस्ट्रेशन 1. इलस्ट्रेशन 1 क्या है? मैंने तो पढ़ा दिया ना, आई सॉल्व्ड इट. नो, नहीं, वो समझ में नहीं आया, उसका नहीं आया, बाकी सारे आंसर्स मुझे मिल गए. इलुस्ट्रेशन 1 आप एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट वाला, वो राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस. वो तो राकेश स्टार्टेड बिजनेस क्या है आपके पास? ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, और आपका ड्राइंग्स भी है. मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया? आप बताओ ना, फॉर्मूला क्या बताया है मैं अभी तक? क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. आप टेक्स्ट बुक से कुछ भी वैसा स्ट्रेट सा कुछ मत पढ़ो. मैंने क्या आपको समझाया अभी? क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल को कैसे फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हो. मैं सभी 8 इलस्ट्रेशंस एक्सेप्टिंग फॉर 6 and 7, 6 इलस्ट्रेशंस मैंने आपको यही फॉर्मूला फिर से पढ़ाया. आप कहाँ थे? वो शुरू में सेकंड नहीं समझ आया, बाद में मेरे सारे समझ में आ गए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. सेकंड वाला नहीं समझ में आ रहा बस मुझे, बाकी सारे समझ में आ गए. वो क्या फॉर्मूला है? समझ में आना है वो तो छोड़ दो. फॉर्मूला क्या है वो? क्लोजिंग कैपिटल एड ड्रॉइंग्स माइनस योर फ्रेश कैपिटल. आपको ये वाला फॉर्मूला कैपिटल मिलेगा. वो कंपेयर करना है आपका दिया हुआ कैपिटल क्वेश्चन पे. उससे फॉर्मूला कैपिटल ज्यादा है तो वो नेट प्रॉफिट है, नहीं तो वो नेट लॉस है. ओके, मेरा क्लास फिर भी ये यूट्यूब में है ना, आप पहले से देखो तो आपको समझ में आएगा. खुशी? Hello. Yes, Hello. Kushi, please tell me. मैम आई एम ऑडिबल? You are, tell me. अच्छा मैम, मुझे ये पूछना था कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि सिंगल एंट्री से बैलेंस शीट बनानी है या वैसे वो सिंपल? दिएगा. आप प्रैक्टिस करने के हिसाब से आपको ही मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने अच्छा, से. जैसे डेटर अकाउंट मतलब उसी हिसाब से दिया नहीं होगा? नहीं, वो तो सिंगल एंट्री का मेंशन किया ही होगा. इनकम्प्लीट बुक्स ऐसा देगा, नहीं तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऐसा कुछ वर्ड्स आपको क्लू में देगा. यू डोंट ओके, हैव टू थैंक वरी. यू मैम. नो वरीज, थैंक यू. Okay, then we are marks for this illustration 8 and some 10 or 12 marks. Okay, Sri Krishna. Okay, dears, everybody, thank you. Is Priya there? Priyamvada is there. She told she will conclude the class. Do we have her? I think she's not there. Okay, Manish and Ajit, I'm just exiting. Okay. Thank you, everybody. Bye. We are done, है? Yeah. Thank you. होमवर्क आपको है अक्षित, आप तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, होमवर्क करो. थैंक यू, बाय.